I hope you can hear my voice and see the screen. Let's do a quick check. Kindly type in the chat box if you can see my screen and hear my voice. Thank you, Hitesh, for confirming. So we will start in a couple of minutes. Thank you all for confirming. We will start in a couple of minutes. 11:05 in at my watch. We will start the session. And anybody remember where we ended in the last session? Where did we end? I guess butterfly was we were doing butterfly. We ended the session at butterfly about the calculation part. So we'll take it from there. We'll finish butterfly first. Then we'll discuss about implied volatility a bit more. And then we will talk about Greeks. Let's start the session. Let me start recording also. Yeah. So we were doing butterfly. I guess we remember the calculation. What was the calculation of the butterfly? You buy one leg, you sell two legs, and butterfly calculation. Yeah, this was the butterfly. How we calculate the break-evens, middle strike price plus minus the maximum profit. This was the task we did. So, and our wish list is let the market expire at 10,300 or the underlying come to the middle strike and stay there. How to choose the strike difference? Larger the number of days, larger the strike difference. That's how we go about the butterfly. Okay. When do you do butterfly? कब करते हैं? Why do we do it? And what is the risk reward scenario in this? Let me put some thoughts into it, and then we'll go on into some other strategy.
The first one, it's a low risk, medium reward strategy. Low risk because you know the risk. When you go for long butterfly, this is a low risk strategy. But the reward is maximum when we reach at the expiry, not when we are at the middle of the expiry. Reward is maximum at the end of the expiry. So if there is someone who can say confidently that Nifty will expire, let's say 10,300 or 10,400 or 10,500 or 10,600 or whatsoever the figure is, then which is very tough to do, no doubt about it, which is really very tough to do. So if somebody can do it, this is a very, very nice strategy. So you know the risk and reward in this. When you know the risk and reward, the point now comes in how to think about this butterfly strategy. So let me take one strategy for you and then discuss it with the in details about how to implement this one. So let me go to NSE India, live markets, equity derivatives, option chain, and put Bank Nifty. I'm choosing Bank Nifty over Nifty because Bank Nifty expiry is about to come, which is a weekly expiry. It expires every week, Thursday. So 12th April is the expiry for the weekly expiry. And my guess is, but Bank Nifty will be down for the week. Let's say this is my guess, or up, whatever your view is. But sometimes your view or there might be a question that a little more colored than usual. So in order to take benefits of them, we can employ this strategy. I'll explain it, most of it. I'll explain. Bank Nifty. So those who know technical analysis, or even if you don't know, so this seems good resistance, or if it breaks, then it becomes the support of whatever your view is. This is a very good place, trade location, if you ask me, for entering into a transaction or exiting into a existing transaction. So my point is, for me, it's a good place to enter
into a put butterfly or a call butterfly. My view from here is, let's say I have a downside view or upside view, whatever my view is. So, but I'm not very confident that it will come so fast and so soon. So let me see what are the possibilities I have with respect to butterfly. Let me put down the prices in my calculations here. So I'll take the put side and the call side. I'll take the ATM and OTM. Always use ATM or OTM because butterfly में अपना view क्या था? Not view, but अपना objective क्या था? You want the underlying to come to your middle strike price. So the strike price, middle strike price has to be away from current, so that it comes to your middle strike price and stay there to make you profits. So अभी अगर 24,900 रुपया चल रहा है, and if I make the middle strike price 24,900, then long butterfly will not make money. But when it moves away from the middle strike price, what I want is the movement should take the underlying to my middle strike price. So in case, let's say I'm taking a put butterfly of randomly, I'm taking 24,500, 24,400, 24,300. This is put butterfly. I'll always be taking either ATM or ITM, OTM butterflies. In the money में butterfly नहीं करेंगे, because in the money, one, it's not in the monies are illiquid, one, and second, it is not going to fulfill your purpose. क्योंकि if put के लिए वो in the money है, तो call के लिए out of the money है. So it's better to do call out of the money rather than put in the money. Next, this was a put butterfly example. If I had to do in this case, my wish is the underlying should come to middle strike price, which is 24,400. Which is 24,400. It may or may not come. It may or may not come. I'm just taking a random example here. So in the same way, I can take call butterfly of 25,300, 25,400, and 25,500. So you can the choosing of strike price part can come later. Let's first look at the prices of all the butterflies. Which strike price to choose, I'll explain a bit later. थोड़ा सा बाद में. So first, let me take the prices of ATM and OTM call and put option. The strike price in put option is going to be 25,000, 24,900, 24,800, 24,700, 24,500, 24,300. For call, ATM and OTM, the strike price would be 24,800, 24,900, 25,000. The prices. $285, $239.
Kindly mute yourself, everyone. And the call side is 201 155 114 17 7 155 114 78 63 50 sorry 78 54 36 25 54 36 25 25 50 15 50 600 no. So these are the prices for calls and puts. These are the put prices, these are the call prices. Let's create a butterfly of 100 gap and 200 gap also. Okay, let's find the price currently that is going on. So this plus this minus 2 into this for 100 gap 25,500 24,800 minus 24,900 मिडिल स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंगे डबल सॉरी 25,500 282 and 239 282 or 239 the prices are wrong 200 गैप है तो 24,800 को डबल बेचना है प्लस this one that is 29 rupees In the same way, let me calculate for the call butterfly also. This is 100 gap and this is minus 2 into plus. ये पुट साइड में 100 के गैप पे है एंड 200 के गैप पे है ये कॉल साइड में 100 एंड 200 के गैप पे है सो फर्स्ट थिंग द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू दैट शुड गो थ्रू योर माइंड इज व्हाटएवर दिस प्राइस इज 12 तारीख में आप इन दोनों प्राइस में से कुछ भी आप चूज करते हो टू ट्रेड विथ if you choose any among these combinations ये तीन कॉम्बिनेशन मतलब ये कॉम्बिनेशन में कुछ भी प्राइस चूज करते हो लेट्स से यू चूज दिस 13 रुपीस कॉम्बिनेशन 13 रुपीस चूज करने का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ
24,500 का पुट लेना, 24,300 का पुट 2 बेचना, 24,100 100 का पुट 1 लेना. So your maximum loss is 13 rupees. So this price is telling you your maximum losses. If you do it for one lot, then 40 is the lot size into 20, that is into 13, that is maximum loss कितना हुआ? 520 rupees plus taxes cost. But the transaction cost is different. I'm not talking about the transaction cost. So this price tells you your maximum losses. The purpose to calculate is this. So now the thinking that goes in my mind is, I have, let's say I did it on कब ये कब की प्राइस ले रहा हूँ मैं? फ्राइडे की प्राइस ले रहा हूँ. I have 7 days to 7 days for this. So I have 7 days to employ this strategy. 1, number of days count करो. 7 days. Capital that you need to employ this strategy. So go for Zerodha margin calculator. What is the margin that you will need? Bank Nifty calls, let's say you want to sell for 25,200, 80 shares, sell, add. So it is asking about a margin of 1,35,848. If you go long into 25,000 with this, add. Sorry. So your margin would be approximately 1,13,000. So let me assume that the margin is 1.5 lakh rupees. On the higher side, 1,35,000 is the margin amount. Clear? Days 7, margin required. Margin required. Max loss equals to 13 into kitna? 40 is the lot size for one lot. Let's say whatever the price is, that is into, I'm taking 13. I'm taking this one, 13 into 40. That is 520 rupees. This is your seven days. 7 days. How come this is 7 days? Current last Friday to Thursday. The expiry for this is 7 day is 7 day calculation. Friday to Thursday expiry in Bank Nifty. You employ this on Friday, you employ this on any of the days, but your margin, you need to know, first you have margin amount and days to expiry is 7 days for this. At least 12 तारीख को expire हो जाएगा, so you know what is going to happen. Now, I have little confidence on the movement of the Bank Nifty. If you have little confidence, you will put little money at risk. You have good confidence into the underlying movement, you will put a lot of money and you will play direction. So let me give you an example. Let's say I'll put a chart in front of you and this is Nifty chart. You may be bullish on this, you may be bearish on this. Everybody has a different opinion. If you look for the XYZ time frame, तो इसमें bullish भी लग सकता है, bearish भी लग सकता है. मेरा एक अपना view है, आपका एक अपना view हो सकता है.
if my view is very strong, I'll try to take position into futures into n number of quantities. If there is if and but in my analysis, I'll try to look for options buy or sell scenario. Options में buy or sell करेंगे कि थोड़ा सा लगता है कि गलत भी हो सकते हैं. So I'll try to put my position into options. Mostly we use options for that purpose. Now, if you have much lesser confidence than that कि call put buy naked भी नहीं करना है, तो फिर आप क्या करोगे? Then you employ a strategy wherein you have limited risk, very limited risk, but the reward could be significant if it happens compared to the risk you have taken. So this is that strategy. यहाँ पे you know your maximum loss is 520 rupees. Obviously you should know your maximum gain also, which is 100 into 40 minus, which is 3480. This is your maximum profit and maximum loss in this strategy. So looks like decent. The only thing you should have, I'm not saying this will come or not. All I'm saying is the probability that you are trying to find कि मेरे को तेजी लग रही है, but my degree of my confidence is not very high, then you will employ these strategies. Okay. One big mindset change that is required in this strategy is about the margin required. So what is the mindset change that we for this strategy, the margin required is 1,35,000 per lot of Bank Nifty, 40 minus 80 plus 40. Okay. If you do 2 lots, then it will be 2,70,000. So the mindset change in the margin requirement is goes like something like this. Margin is something that will be released to you once the strategy is over. Margin is something that will be released to you once the strategy is over. Clear? Your maximum profit and your maximum losses is the amount that you have to bear once the strategy is over. If you have the maximum loss amount figure in front of you and you can afford it, let's say I can afford for this strategy of mine, I can afford to lose 5,000 rupees. Let's say I can afford to lose to the 5,000 rupees for this particular strategy. If it goes in my favor, I'll be happy. 1:3 का scenario में भी अगर 5,000 लग जाए और 15,000 आ जाए, I'll be happy. This is my view. Now what happens is currently 5,000 मतलब मेरे को 10 लॉट करना है. 10 लॉट मेरे करेंगे तो 5,000 के आसपास आ जाएगा मेरा लॉस अमाउंट, बट उसके लिए मेरे को चाहिए 13,50,000 रुपए, 13,50,000 rupees, and that is not there in my account. So the only choice that becomes is, should you be borrowing money for this? Should you be borrowing money for this? Most of us are not in favor of borrowing money to trade, but let me clear some of the notions in that respect. The amount we are borrowing is for 7 days. One, you borrow that money and you pay back that money. This is a discipline part that I'm talking about. You borrow that money and you pay back that money. Pay interest on that. So that becomes your part of your cost. That becomes part of your cost. That is not the money that you are keeping with you. That is the money that is required in your business, required you to do business. That is your working capital. You take money, you give back money. You take money, give back. So there is an interest part which is going to be applicable to you. So the opportunity cost for this will be आपके लिए, let's say 12% per annum or 15% annum, whatever your borrowing cost is, 15% per annum, and the number of days will be 7 days. So my opportunity cost for this becomes %12 divided by 365 days into 7 days. So
whatever that comes in, I'll have to pay back to the person who I borrowed money from. So which comes to around 310 rupees per lot. So my cost for transaction other than my transaction cost becomes this plus this 830 rupees. If I keep it for the entire 7 days, I keep the strategy from day 1 till Thursday. So my total cost becomes 830 rupees. So per lot will be 20 rupees will be my cost for doing this transaction. Why we should think in terms of opportunity cost also? That is this. Why should we always think in terms of opportunity cost? Because just let me tell you the absolute figures. So 500 रुपए लगने को है, 3500 रुपए बनने को है. Might not be, to some people this might be exciting, to some people this might not be exciting. हो सकता है you can make this consistently very well, but the figure is very less. The figure is very less. But let me put 2 zeros into it, or 1 zero. 5000 लगने को और 35000 बनने को है. Now that becomes an interesting thing. 5000 लगने को और 35000 या 8000 लगने को और 35000 बनने को है. Then it becomes an interesting thing, and that can only become once you have the entire calculation with you about your borrowing cost. You know you are never going to lose this money. The capital you employed, you are never going to lose it, because unless you are indisciplined in the sense you exited one of the legs. आप एक लेग को एग्जिट कर दिया, जो एक बेचा हुआ है उसको काट, जो एक लिया हुआ है उसको बेच दिया खाली. If you do this indisciplined, तो वहां पे वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी. Otherwise, if you borrow this money, then it's good to do this business. Then it's a scalable business. Now comes the part whether you should do it or not. How often should you do it? Girish has a question. Why are we discussing strategy when so much of Greeks are pending? Don't you think strategy should be at the end, sir? Girish, we were doing butterfly last time, and I wanted to complete this one. And after this, we will be discussing volatility a bit, and then we will talk about Greeks. And I'm talking about a strategy where the role of Greeks are very, very less in this. So will not be affecting you even if you don't know the Greeks in this. So the point in this strategy becomes, when you have so less to lose and you have little confidence, it's about the confidence you have into the going into the expiry. Not always you have the same confidence going into the expiry, but this presents a very good opportunity. Let's say जितना एक्सपायरी पास में होता है उस समय ये करने का, ये स्ट्रैटेजी करने में उतना ज्यादा ये बेनिफिट प्रोड्यूस कर सकता है. I may not be able to say कि Nifty will expire at 24,900, but I may be able to say that it may expire within a range of 400 points. 400 points or 500 points or Bank Nifty, if you could do that, then employing this strategy is a fruitful thing. The risk or the bottlenecks in this strategy is, one, it's a 3-leg strategy. It's a 3-leg strategy.
And second, execution risk. Execution risk is one of the very big risks in this strategy. Big in the sense you do it over the internet, and you try to execute the 3 lots at one go, which is not possible. You have to execute it one by one. The cost of your the slippages that may occur while you are employing the strategy can be in your favor or in your can be unfavorable also. Let's suppose you are looking at the figure of 13 right now, but जब आप execute करने गए तब हो सकता है ये 97 का प्राइस 93 हो गया, 93 हो गया, while rest of the 2 prices were same. So ये एक execution risk इसमें inbuilt है. So this is about butterfly strategy. If you have any questions on this, you can ask. I use it often. Around expiry. जितना expiry दूर होता है उतना मेरा gap बढ़ जाता है. I use it often. And so when you see the charts, like we just saw the activity chart, if it opens above that level, like above the resistance level, then we can use the strategy. So this calculation is for 100 gap or 200 gap. Raghav, Vijay ji, this is the calculation for 100 gap, and you want to use for 200 gaps. Sorry, this is a calculation for 200 gap, which is 24,500, 24,300, 24,100. So this will be different. It's not going to be 100. It's going to be 200. The profit and loss are going to change, and which is phenomenal. To my mind, you add 1 0 to it, and if you can guess the expiry, let me repeat a bit more. When you should do it, the closer the expiry, the shorter the gap. When you should do it, I guess that's the answer for now. जितना एक्सपायरी के क्लोज है उतना आप गैप शॉर्ट करते जाएंगे. कब नहीं करना चाहिए? राइट नाउ वी आर एट अभी कितना तारीख है? 8 तारीख है ना? 8 तारीख है. 26 अप्रैल इज द एक्सपायरी. एक्सक्यूज मी, 26 अप्रैल इज द एक्सपायरी. Nifty has 50 का strike price also. So if you employ a 50 का gap currently, it will not benefit you at all. जल्दी से benefit नहीं आएगा. 50 के gap को last तक रखना, that is not a feasible thing. So if you employ a 200 points का Nifty का butterfly, then it's a good thing. From my side, from my angle. So I preferably use this more into Bank Nifty. Bank Nifty में क्योंकि there is a expiry every week. There is expiry every week, and it is tough for me to guess the mood of Bank Nifty every time. I may be able to guess a bit of direction, but I will not be able to do it consistently every week. So, and I don't want to lose a lot of money into that. I can borrow money, but I don't want to lose a lot of money for my conviction that I buy naked calls all the time. So what I do is I do a butterfly trade so that I make less money, but I make certain kind of money if my direction is right, or I lose less money when my direction is not right. I'll do. So if you look for Bank Nifty, you
depend when the timing of it. Let's say, when will I employ it? Friday, Tuesday, Monday, Wednesday. Since the mood of Bank Nifty is such, it is tough to say the timing of it. From my angle, if I when will I use it? I will use it at a good trade location. For me, trade location is more important in this. यहाँ से probability of moving, because everyone, if you look, if we look at the charts where the 10,330 and 24,900 के आसपास, there is a good amount of time that both the indices have spent before also. So that place becomes a good place where it can take one of the directional moves. Somebody help me with this chart, which goes like this. Something like this with Nifty. So to me that looks decent. सबकी अपनी अपनी वर्किंग होती है, सबका अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है टू ट्रेड. You may be able to understand it and you may be able to not understand it. The point in this is you have little confidence in your direction. If you have good confidence in your direction, you will be employing futures. Little more moderate, you can apply naked call, naked puts. And less than that, you can employ these strategies. If you have long view, यहाँ से long का view है, you can employ call का butterfly. And if आपका short का view है, you can apply put का butterfly. Remember, the idea is you want the underlying to come to your near strike price, middle strike price. That is the idea. Got it? The only thing that the one person, why you should not, why one doesn't do it, is about the borrowing of capital. That's a tough thing from the individual level. It's not a smooth thing. You can do it, but the smoothness is a bit challenging in terms of borrowing and paying back. So that's a bit challenging. Otherwise, it's a nice strategy to employ if you have conviction on this strategy. Any more questions in this? Okay, there was a question, how can we protect ourselves from this risk? I guess this is the least risky strategy we have. Muted. About the adjustments, what do you call about? What do you mean by adjustment? Adjustments are adjusting your strategy if the your initial view is violated. What is an adjustment? Then only you do adjustments. If your initial view is violated, then you do adjustments. So let's say I was thinking about short view. मेरा view था short का. So I did a put butterfly. What I did was a put butterfly. Now the market is up 100 points, and I guess my guess is now the mood is up in the market. अब ये नीचे नहीं आना चाहिए. So I have two choices: either to book the entire profit and loss, what obviously that will be loss, book the losses and employ another one strategy, or adjust this strategy in such a way that I don't lose. So what are those adjustments?
So in this case, let's say you had employed 24,500, 24,300 and 24,200. 24,500, 24,300 and 24,200. This is the strategy that you employed. Now you get 24,600, sorry. Nifty यहाँ बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट राइज करता है एंड यू थिंक कि मार्केट इज नॉट गोइंग टू कम बैक, कम लोअर, नीचे नहीं आने वाला और मार्केट, बिकॉज इट हैज ब्रोकन सम रेजिस्टेंस और XYZ, कुछ भी ऐसा जो कि वॉट एवर यू फॉलो, चाहे वो मैक्रो न्यूज हो, चाहे वो योर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो, वॉट एवर यू फॉलो, मार्केट अब नीचे नहीं आने वाला. That's a gut feel. That's something that you can. That's your adjustment nature for adjusting. So how can you adjust this? You have to cut down the premium amount that you have invested. If you want to cut down the premium amount you invested, the objective is lower the premium amount invested. That because that is your maximum loss. There are two ways of it. Lower the premium amount invested. That can only happen by selling some strategy, selling some options. Lowering the premium can happen only by selling, not by buying. That's sure. Now that can happen two ways. And selling a current buy position, you have to sell one lot. Now, which one to sell? You have this in buy, -2 into sell and buy position. This is your buy. This is your position into this. Now, if you sell the 24,300, if you sell 24,300, or let's say if you sell 24,100, this is your buy position. If you sell, you will not need to put extra margin. आपने buy वाला sell किया, आपको extra margin नहीं देना पड़ेगा. But if you sell another lot, that is let's say 24,000 का बेच दिया या फिर 24,300 का एक extra बेच दिया. If you sell a fresh contract, then you will need to put in extra margin for the same strategy. So the choice is either sell 24,100 or another one. If you sell 24,100, you don't need to put extra margin. And if you don't sell it and you sell something other than that, you have to put extra margin in that. Okay. What you should not be doing in this case, if you sell 24,100, you should be prepared. Generally, I don't prefer naked sell position in put options. I personally don't prefer naked sell position in put options. That's my personal preference. People do, and you may also do, but for the better risk and reward, because black swan is something that we have generally not seen. We cannot generally predict. It will happen, and then only we will be able to see it, to understand it. That is why I try not to sell naked puts. That's one of my risk management practices that I follow. When you're doing a sell of 24,100, let me write it this way: 500, 24,300, 100. Buy, sell, and buy. If you sell this, then you have one naked position into put options, naked sell. If you sell 24,100, that is, this position is no more there. This position is no more there. Then you have this one buy and this sell too. Then it means there is one naked sell. If you sell this one, then also you have naked sell position.
and the risk also increases. So adjustment is for lowering the premium. You should sell one lot in this, but be prepared. If you sell this, your risk increases. Sell one lot of this buy, तो वहां पे आपका एडजस्टमेंट तो हो जाता है, बट यू आर कन्विंस्ड दैट द मार्केट विल बी गोइंग अप, then only you are doing adjustment. If you don't do adjustments, you may lose the premium that you applied, entire premium. If you sell this one, you have lowered the premium invested, but you have increased the risk a bit. So that's how the adjustment goes on. The question is, I think Bank Nifty gap 100 gap will have lesser risk reward than 200 gap, right? Yes, you are correct. Bank Nifty 200 gap will have lesser higher risk reward. 200 का gap में high risk high reward, 100 के gap में low risk low reward will be there. So if you ask me to put a Bank Nifty butterfly, I'll try to put it on Friday. If it is Friday, like yesterday, last Friday, I'll put a 200 point gap butterfly. Or if you do ask me to put it on Wednesday, I'll put it 100 gap. That is coming Friday, coming Thursday, Wednesday. So that's how I'll do it. I hope that is clear from the point of butterfly. Let's move ahead. If you have any question, kindly put it in the chat box. You have 2 minutes for that. These are our next topic: implied volatility rank and implied volatility percentile. So for the direction of the market movement, you could see the chart with the Bank Nifty. Like if you feel that it will break that level and then you buy it. As a trader, I employ directional as well as non-directional, both type of trades. I don't limit myself for that I will only trade non-directional or only trade directional. I don't limit myself for that. So if you ask me, do I look at charts? I will say yes. Do I look at fundamental analysis of the stocks? I'll say yes. Do I look at the macro news developments in the world market? I'll say yes. Because all of them, do I look at option prices, option open interest? I'll say yes. All of these help me in creating my strategies. Till the time they are helping me, I'll listen to them all. The weightage of my decision on each of them will be different. Charts का conviction कहाँ पे ज़्यादा है, नॉन डायरेक्शन का कन्विक्शन कहाँ पे जाता है, वो हर एक डिसीजन पे डिफरेंट होता है.
Nimal ji has a question. According to you, when it is the best time to do it in weekly settlement of butterfly bank nifty? Nimal ji, the best time, if you ask me, is your good trade location. So currently for me, the trade location is really good. 24,900 पे है और बैंक निफ्टी का जो निफ्टी का जो चार्ट बना है उसके लिए मेरे को थोड़ा सा my personal feeling was that Nifty will not be crossing 10,330 in a hurry. So this was my view. After looking at it so many days, my view personally was that Nifty will not cross it in a hurry. The next level is 10,600. So that was my view. Your view could be Nifty will come to 10,600 in a hurry. The view will differ from each other. So for my view, and since the expiry into bank nifty is on 12th, I will employ a put butterfly. Okay, one more risk that I forgot to mention, that is the risk of STT, security transaction tax, which is around 12,500 per crore of notional value. How do you calculate this? So let's say you employ a 24,500, 24,300, 24,100 butterfly. These are put options. ये put butterfly आपने employ किया है. Now bank nifty expires at 24,400. बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इन द मनी हो गई, आपके एक ये वाला पुट इन द मनी हो गया. दिस पुट बिकम्स इन द मनी. नाउ when it becomes in the money, government will tax you. There is security transaction tax if you let it expire on the, अगर आप इसको एक्सपायरी में डाले, इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया आपने ट्रांजेक्शन को, in the expiry, if your option is in the money, if your option is in the money, you will be charged STT. So how will the STT calculation happen? Bank Nifty expired at 24,400 into 12,500, sorry, divided by 1 CR. 1 crore है ना, 10 crore हो गया, which is 30.5 rupees will be charged per lot. ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा. So so it is advisable for everyone to square off this contract rather than let it expire. Rather than let it expire. Clear? आपको इसमें मिलना कितना चाहिए था? अगर ये एक्सपायर हो गया तो इसमें आपको 100 रुपीज आना चाहिए था. द पॉइंट इज आई एम मेकिंग इट, इसमें 100 रुपीज का पे ऑफ वैल्यू होना चाहिए था. पे ऑफ वैल्यू होना चाहिए था. आउट ऑफ दीज 100, 30 विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट इफ यू लेट इट एक्सपायर. इफ यू स्क्वायर ऑफ, यू मे गेट लेस देन 100. आपको 100 मिले या लेस देन 100 मिले, जो भी मिले, दैट इज एक्सपायरी सिनेरियो. बट if you let it expire, 30 will be charged from your account by the government. Okay, it's a weekly expiry, so you should look at the spot data on the 12th of April for expiry, not the future data. Expiry always happens on the spot data, not the futures data. Let me go ahead and now implied volatility percentile and implied volatility rank. I guess some of you have done the exercise.
Kirishji, you have a question. Hope you will show us how to read and interpret IV in MyFNO and option chain from NSE. I've mentioned repeatedly, Girishji, that there are a couple of things that are pending which are necessary and important. Let me finish them first, and it will be helpful for you. And once that gets finished, it will be easier for you to understand your requirement. And as far as interpreting of IV in MyFNO and option chain is, let me finish a couple of points and topics and employ them entirely at one go with one strategy. That, in my opinion, will be more helpful than going in by individual queries. Okay. Thank you, Girish. Implied volatility rank and implied volatility percentile. These are two concepts. We have understood what is implied volatility. At least basic part is understood that this is part of the pricing of options. Okay, part of the pricing of options. So if I ask you what is the option, how do you calculate option price? What are the factors for the option prices? So there are three factors for option prices. One is direction, another is time value, and third is implied volatility, which is a silent factor. We call it intrinsic plus time value. Once we have understood implied volatility, we cannot ignore implied volatility. It is a part of option pricing. Clear? So we have established it so far. Now what now? What now? How do you understand now? How can you compare implied volatility? The point is, we have seen volatility of Nifty from 8% to 80%. 8% to 80%. I have seen in my 10-year career. So what are the measures that I will? There are 200 stocks, more than 200 stocks. Which volatility should I choose? Is this volatility good? Is this volatility bad? I mean, volatility, to buy or sell volatility, you have to employ, you have to understand whether the volatility is high or low. You have to find whether volatility for the current price is high or low. Like if I ask you in the case of Infosys, the volatility is high or low. The high or low can only be explained with relative pricing, with historical comparison. अमिताभ बच्चन से एक मूवी में किसी जज ने पूछा कि मुर्गी कितनी बड़ी है. किसी मुर्गी के बारे में बात हो रही थी, तो मुर्गी कितनी बड़ी है या कुछ एक इस तरह का किस्सा था. आई कैन नॉट शो यू हैंड्स, बट उसने बताया एक जब वो कटघरे में खड़ा था तो अपने साइज का एक हाथ खड़ा करके कहा कि मुर्गी इतनी बड़ी है. तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये इतनी बड़ी कैसे मुर्गी हो सकती है. लेट्स से 6 फुट हाइट, ही सेज कि अपनी हाइट अपने हाथ की हाइट पे ही उसने कहा मुर्गी इतनी बड़ी है. सो एवरीवन वाज शॉक्ड कि मुर्गी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है. एंड देन ही मेंशंस कि सर अभी दूसरा हाथ लगाया नहीं है, तो नीचे में भी हाथ लगा के बताया कि हाँ मुर्गी इतनी साइज की है. सो द कंपैरिजन of volatility is high or low can only happen with previous historical prices. Otherwise, there is no comparison. Let's say Infosys volatility is at 35%.
NFI volatility is at 35% versus TCS volatility is at 30%. Which one would you sell and which one would you buy? And how will you arrive at these decisions? Or let's say DLF volatility is at 45% and JP Associate volatility is at 70%. So how will be your buying and selling decision among these will happen? So volatility buy sell karte kaise? That is the next question that you can have in your mind. First, assume that you know that these are the volatility that you can buy or sell. So how would you, which one would you buy and which one would you sell? That's the question that you may have. If you look at these individually, then you will say this is the lowest one and this is the highest one. So I'll buy this one and I'll sell this one. But that's the wrong approach. That's not the right approach. In my opinion, that's not the right approach. To understand why this is not the right approach, the right approach in my opinion is that if in the last 1 year TCS volatility has always been below 30%, then this is the highest volatility for TCS. So for TCS the volatility is higher, so it should be sold when when the assumption, in fact in this case the assumption is volatility is always mean reverting. Volatility is mean reverting. In fact, most of the asset classes are mean reverting. So the TCS volatility is as highest, and there could be a point that JP Associate in the entire year was always above 90%. Right now it is at 70%. So the volatility in JP Associate is the lowest. The comparison, what I'm saying is, of volatility should be with individual stocks, not with different stocks. Point number 1. Okay. Point number 2. Is there a range shift in IV? Sangeeta ji, just wait for a while. Let me complete and I'll take your questions afterwards. Point number 2. There are 2 ways to compare its own historical volatility in the stock. First is IV percentile and second is IV rank. Okay, let me put the formula for IV rank first. The formula for IV rank is current. IV rank, what it does is it compares current volatility with high and low volatility for a particular period of time. The formula will explain a lot. Current volatility minus lowest volatility. The entire thing will be divided by highest volatility minus lowest volatility. Let me put it. Current volatility by lowest volatility minus lowest volatility divided by highest volatility minus lowest volatility.
So basically it is comparing the volatility where it is standing in a year's period between high and low volatility. Let's suppose current volatility is lowest volatility. ठीक है, अभी एकदम लोएस्ट चल रहा है, सो ऑलमोस्ट द लोएस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. The upper will be zero, almost zero. So it will show that the implied volatility rank is almost zero. Let's say the implied volatility rank में यहाँ पे current volatility is highest volatility. So this highest minus lowest and this highest minus lowest, it will be almost equal to 1, which is almost, it will always be in percentage. So it will be 100% almost. Yes. So it will, you will, if I give you a number that implied volatility rank is 70%, that what does that mean? That highest in comparison to highest versus lowest, it is standing almost at 70, 0.7 range of the volatility. So if I give you a list of stocks and if I give you the implied volatility rank of all the stocks, it is easier to sort them. You can sort them with implied volatility rank. The highest rank will come first or the lowest rank will come the last. So you will be able to filter out, let's say XYZ stock is at the highest volatility and XYZ stock is at lowest volatility. So now for me, since volatility is mean reverting, what I would try to do is sell volatility in the highest IV rank and buy volatility in the highest lowest IV rank. Another way of doing it is implied volatility percentile. Implied volatility percentile is used to do away some of the for smoothing of the volatility comparison. Why you are saying smoothing of the volatility comparison? So let me give you a data and a series of volatility. Let's say I'm talking about NFI volatility itself. NFI volatility over let's say 15 days or 20 days. 27, 28, 29, 30, 29, 28, 35, 45, 30, 29, 28, 26, 6, 30. So if I give you this NFI volatility, these are the daily NFI volatility for the Infosys. The highest in this is 45 and lowest in this is 26 equals to max equals to minimum. 45 and 26, if you compare this data and if you find the current volatility is, let's say 30, current volatility is at 30, the comparison will happen 30 minus 26 divided by 45 minus 26, like this, and it will show some data. But if you look at this closely, that only one of the days out of those count is 12, out of 12 days only there was one day where the volatility rose to 45. It could be a spike,
in the volatility. There could be n number XYZ reason for the spike, but the spike could happen. This spike can distort the data, or the spike can distort your analysis, because only one day was there where the volatility was 45. Now, if tomorrow, let's say after this data, if tomorrow Infosys volatility is at, let's say, 36% or 35%, and if you calculate the rank for this, the rank is 47%. The rank is 47%. So which is normal, 50-50 chance hai. However, if you look at the data, if you look at this entire data, the 35% is second highest. 35% is the second highest volatility in this data. Being second highest and being 50% are two different things. Being second highest and being 50%, 50% एक is a आपके पास 50-50 possibility, इसमें आप ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो. But if it is second highest, I can think of selling it. So implied volatility rank से बहुत better होता है implied volatility percentile use करने. What is implied volatility percentile? It talks about number of days, let's say in a year. I'm talking about implied volatility percentile in a year. The number of days the volatility has been below current volatility. So if the implied volatility percentile is, let's say, 80% percentile, so that means for the 80% of the days, the implied volatility has been below current volatility. For the 80% of the days, implied volatility has been below current volatility. If the implied volatility percentile is 10, that means current volatility, only 10% of the data is below current volatility for the number of days out of 1 year or whatever period you choose. Now the point is, sir, who will calculate this data? Where will we get this data? Who will calculate this data and where will we get this data? There are three sources for this data. Three sources, 2 free resources and 1 paid resources. First, capitalmind.in, options, snap.capitalmind.in, go to options, go to IV table. This is IV percentile, this is IV rank, and this is the current IV. IV percentile, IV rank, current IV. This is end of day data. I guess no, data is on 8 April 1152.
So they are not very frequent, but you can choose among the most liquid. So this is the IV percentile, where Infosys IV is 92% currently. IV rank is 48%. Current IV is 33%. Tata Steel, ICICI Bank, Bharti Airtel, all these stocks are high IV percentile. You have similar data available in this website also. I don't remember where he put it. So you can you can just explore this website, traderslaunch.in, and you will get this. In MyFNO, you can get this data, but in MyFNO there is a platinum subscription, I guess, that gives you that. So data, go to ranges. This is the range, and do it for stocks group or all. Let's say do it for all, and show IV. So so this is the IV range. When it is saying 25, it means the low is 19 and high is 35.8, and it is between that at the 25th of the percentile. So in order to better understand it, let me click on this. When it is showing 0, when IV is, I have sorted this. When it is showing 0, it means it is at the current IV is at the lowest IV. Current IV is the lowest IV. So Hindustan Unilever IV is 16, which is the in a year, the high and low in this IV boxes that is written 16.16 L, 34.64 H is the highest and lowest figure of 1 year of IV. So this is 1 year data comparison. यहाँ पे आप 6 months भी कर सकते हो, 2 years भी कर सकते हो. So highest is Nifty IT, then Balrampur Chennai, then Sri Cement, Can Bank, and all. IV, please tell that there's a question. Tell the difference between IV rank and IV percentile. IV percentile calculates the number of days the IV has been below current IV in a year. IVP. Number of days the current IV has been number of days the IVs have been current IV. आज से कम कितने दिनों तक IV रही हुई है इन्हें एक साल में? लेट्स से एक साल का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो आज से कम कितने दिनों तक ये IV रही हुई है? सो अगर IV परसेंटाइल इज 92% और लेट्स से 100%, तो इसका मतलब हुआ कि 100% of the days IV has been below this IV. So which is highest IV? Currently is the highest IV. IV rank का फॉर्मूला दिया हुआ है, current IV minus lowest IV in a year divided by highest IV minus lowest IV. फॉर्मूला that's not a फॉर्मूला है ये कि आपके पास एक परसेंटाइल का रेंज आ जाता है कि नंबर ऑफ डेज परसेंटाइल आप उसका निकालते हैं. नंबर ऑफ डेज
the concept is important. मेरे पास ये भी data we get, the number of days the IVs have been below the current IV, and this is where we get the data. यहाँ पे अभी Infosys है, Tata Steel है. So out of, if let's check the data for Tata Steel and Infosys in the IV chart for 1 year period. And show IV. The current IV is 34%. Out of 1 year, it is almost the highest other than this and couple of more bars. The current IV, this purple is the current IV. 92% of the days, this is 365 days, 92% of the days has been below current IV. At least ये establish करने में कोई दिक्कत नहीं. और एक देखते हैं HUL का, कौन था लोएस्ट? HUL मन्नापुरम, कोई लिक्विड काउंटर है क्या? ITC. Let's see for ITC. ITC के IVs are at the lowest. So let's see the chart of ITC and see where the IVs are. So you can see the IVs are all at the lowest in a given year. There are very few places where the IVs have been higher, like this place or this one. As far as this data is concerned, so selling IVs into ITC is not a good idea. Selling ITC IVs is not a good idea. Selling ICICI Bank IVs फिर भी is a better idea than selling ITC. So this remains the purpose of implied volatility, percentile and rank. Now, as far as data is concerned, do you have any questions? कि ये क्या होता है, ये समझ में आ गया? आ रहे ना धीरे धीरे. Any questions on understanding what is IVP and IV rank? If both are high, we sell the IVs. If both are low, we buy. We may not sell. We will not sell the IVs. In the point, someone asked, sir, what is the conclusion in here? Someone asked, what is the conclusion in here? The conclusion is, I'll not be selling ITC volatility. ITC में मेरे को sell करके नहीं चलना volatility को. That is first. ICICI बैंक में अगर volatility sell करने को मिले तो I will be doing that strategy. That is second. These are two conclusions. When we talk about markets, you need a buy decision, you need a sell decision. In terms of IV, these are the ways to take decision. Vijay ji has a question. Can't we directly compare the historical with implied volatility? Do we need these terms? Vijay ji, historical and implied volatility में comparison में क्या difference आ जाएगा? Let me talk about this, and especially with the chart.
this is Infosys IV, and this is Infosys historical volatility. Okay, so with historical volatility, you will not be, this is not a good candidate to sell options. But with implied volatility, this is a decent candidate to sell options. Can I say so? So the comparison of implied volatility with its past figure is important. With historical volatility, sometimes it happens then the historical volatility, like in the case of this, the stock has become highly volatile because of some news, sudden news, but not always is the case. So this is why we use implied volatility percentile and rank to employ these strategies. Now we have understood one part, kiss volatility, to filter the stocks in terms of volatility. Can I conclude that now you will be able to filter the stocks in terms of high volatility versus low implied volatility, comparing its past now. Since volatility is mean reverting, we will try to create such a strategy where low volatility will be a buy and high volatility will be a sell. The decision of buying and selling has no influence of direction in this case. Am I right? The decision of buying and selling has no influence of direction in this case. So in order to create a directional neutral portfolio or strategy, you need this data. Clear? Once you have this data and the stocks, then you start analyzing stocks. Then you what you do? Start analyzing stocks. So let me analyze stocks, some of the stocks for you. I'll take couple of stocks from here and do that for you. Infi, Balrampur Chini, Can Bank, ICICI Bank. ये चार ठीक है, तीन ही ठीक है. Let me do this analysis for you. All these are high IVP. Let me also check what is their historical volatility saying. The historical volatility, if I compare, this is high, this is high, this is high, this is not that high. Out of these three top candidates, can I say Infosys is the outlier one? Okay, historical volatility is the volatility that you compare with the historical prices standard deviation. Okay? Implied volatility is the price that you arrive from the option prices. तो historically इसमें भी IV बढ़ी है और इसमें भी IV बढ़ी है. इसमें historical volatility इसमें बढ़ी है और implied volatility भी यहाँ पे बढ़ गया है बलरामपुर चीनी में. कैनरा बैंक में historical IVs बढ़ी है और implied volatility भी बढ़ा है. The same is the case with ICICI Bank, historical volatility बढ़ा है और IVP भी बढ़ा है. But Infosys में that is not the case. In a 1 year period, you can choose, you can change the period also. In a 1 year period, I'm just comparing things. So can I say that Infosys में
with this data, there is a possibility that either the historical volatility increase or the implied volatility decrease. Can I say that? Now, also let me can we see historical IV in Capital Mind? I have doubts about historical IV in Capital Minds. I need to check some of the places where you can get the historical IV. Again, गिरीश जी, आप अपना कंफ्यूजन बताइए, कहाँ पे कंफ्यूज हुए आप? Please write down your confusion so that I'll be able to understand it. कहाँ पे confused हुए? We will wait till you write the confusion so that we can go ahead afterwards. Yes, Vijay ji, I'll do that. Yeah, which part? Girish ji, which part you are confused, IV and HV? IV is implied volatility and HV is historical volatility. In the last classes, we have done historical volatility and implied volatility both. Yes. This is IV percentile. This 92 is the figure of IV percentile. This is 92 percentile. The high and low IV is 21.81 and 89.35, as you can see in the figure of high and low. Then 92 is the percentile, IV percentile. The question is, on what basis should be the interpretation of IV or HV? The basis for IV or HV, let's first concentrate on IV. IV interpretation is the implied volatility assumption, not interpretation. The assumption is implied volatility is mean reverting in nature. जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा in implied volatility. अगर अभी ऊपर गया है, let's say, let me give you a logical explanation. In Infosys, this has happened in the past that IV has risen and then fallen. यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे गिरा, which is what we discussed in the class also, with the help of a straddle value also, or in the class also, that the IVs rise first and then fall next after the result. Once the event happens, IVs are going to fall. That's what has happened in the history. So my purpose is, if IVs rise first and then fall next, so how can I take benefits of it? So कहाँ पे IV rise कर रही है? My question is that, in terms of 200 stocks, how can I find where the IVs have risen to a 1-year high?
So that is how I reach the IV percentile. This chart is showing in the purple bar, it is the IV, actual implied volatility. And if you compare it in the range, in the percentile session, if you compare it in the percentile, that it will be the amongst the highest in the 1 year period. Let me explain this screen once more. This screen is showing you the percentile for, let me give you explanation for once more. Balrampur Chini, it is showing you the sector, column wise presentation I'm talking about. First is sector, the second is symbol, third is price, fourth is volume, fifth is OI, sixth is IV, and seventh is historical volatility. Okay, now this is a comparison of data of a 1 year period for all these price, volume, OI, IV, HV. One says it is at the low end, 100 says it is at the high end. The price is at 1 doesn't mean the price of Balrampur Chini is 1. It means that Balrampur Chini price is at the lower end of the 1 year period. 99 doesn't mean the price is 99. That means it is at the higher end of the highest end of the 1 year period. I hope you get this right. Any question in this, Girishi? Or anyone you are there? What is this 1 and 99 is explaining? What is the explanation for 1? What is the explanation of 99? If you if any confusion in this, then I'll repeat it once more. गिरीशी, मैं एक बार प्राइस के बारे में यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ये एक बार बताइए, ये आपको कंफ्यूजन है या फिर अभी भी नहीं समझ में आया कि 1 का मतलब it is the price is at the lowest end of 1 year period and 99 का मतलब है the price is the highest at the 1 year period. अपोलो टायर के चार्ट में अगर आप जाओगे, अपोलो टायर का प्राइस में अभी ये 1 साल का 52 वीक हाई चल रहा है और ये 52 वीक लो चल रहा है. Can you is this understood with price? Yes, Naresh ji, you're right. Okay, thanks. If you have understood this, the similar numbers, all the data have similar numbers. All the data is ranging in this case from 1 to 99 only or 1 to 100 only. So if volume is 1 or 0 means volume is at the lowest end, and volume is 99, that means volume is at the highest end. The same goes for IV. IV 0, IV is at the lowest end, IV 99 is at highest end. HV lowest means historical volatility is at the lowest end, historical volatility at the highest end. हो सकता है. No, Girish ji, the understanding could be it's not about, you could definitely ask, and I am here to reply here only. So now when I'm seeing comparison of IV,
and I have in the at the second column HV, and if I compare for these three stocks, the top three stocks or top four stocks, I see only only the historical volatility versus implied volatility. Divergence का मतलब किसको समझ में आता है? Divergences, they are diverging. Can I say that? That's what all I wanted to say. There is nothing else I had to say. They are diverging. All are correlated. HV बढ़ रहा है तो IVs भी बढ़ रही है, HV बढ़ रहा है तो IVs बढ़ रही है, but यहाँ पे HV नहीं बढ़ रहा. HV is at normal place, but historical implied volatility is high. Which either the historical volatility, either the volatility in the Infosys has to rise, either the volatility in Infosys, actual volatility in Infosys has to rise, or the implied volatility has to fall. Now every time this will be the case? No, that's not necessary. Not necessary every time this will be the case. Currently you got a case which is Infosys, and उसके पीछे भी reason है. Always it is the stock that drives all these data, so always understand the stocks also, why it is happening. Now we all know that Infosys में क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी Infosys का results है, and after 12th of April the case will not be same. अगर result में कोई बहुत बड़ा गड़बड़ नहीं होता है, that is minus plus 4-5% of Infosys, that this IV percentile of 92 will not remain there. We all know that, and it is 92 because of the result factor, nothing else. Is there anything else? No. Compare Infosys with ICICI Bank. Now ICICI Bank hasn't announced its result date. One, I'm comparing Infosys and ICICI. I'm skipping the Balrampur Chini for a while. Result date. Result date. April expiry. Generally ICICI Bank, generally I'm talking, ICICI Bank announced its result after the expiry. The first month after the expiry. If you see it for the last so many years, that is my experience. You can check out the dates. It is always in the May expiry. But still the IV in the ICICI Bank is so high. What is the reason? The stock in itself is moving a lot. Historical volatility is speaking to you that yes, ICICI Bank is actually volatile. That scam is there. Chanda Kochar and the Videocon scam is there. So the people are worried. That's why the IVs are higher. That is why the historical volatility, you can look at the charts of Infosys versus ICICI and you will feel it. I'm opening the Infi chart. Here. And ICICI Bank chart. This is the Infosys chart and this is the ICICI Bank chart. You see the gaps, ups, downs, ups. Last at least these many days, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so forth. So this is the ICICI Bank versus Infosys. You see Infosys, there is no volatility as such, but in ICICI Bank, it's more volatile than Infosys. So you feel it if you look at the charts. Okay, and that is there in numbers. Historical volatility in Infosys is nothing, but in ICICI Bank, it is there. Now you go into the tip of stock. What is happening in the stocks? Stocks result date April and May. So at least result is not going to affect ICICI Bank. So what is affecting ICICI Bank is the inside story of the management, which in itself is big.
Sangeeta ji, give me some time. Let me complete it and I'll show you how you can do it. And now, the trade between both of them. What is the trade possible in both of them? I will choose to employ, जैसे Infosys के trade के लिए we have discussed. Infosys IV percentile is 92. IV percentile is 92. It's good to sell. It's good to sell. But however, current my position is long. My position is long, and I have mentioned this to you that I will go short if at all I have to go short. I will go short on the 10th, or I will exit it before. For those who want to take a little of risk, किसी को रिस्क लेने का मन होता है तो क्या किस तरह से रिस्क ले सकते हैं या किस तरह से आप उस आईवी को स्क्वीज कर सकते हैं. Infosys is IV are good to sell because there is result coming, और आप इसका IV परसेंटेज को बेच के आप इसमें एक ऐसी strategy, you can create one strategy wherein you are selling volatility without having a lot of direction. मतलब एक नॉर्मल डायरेक्शनल मूव आएगा तो फिर यू विल नॉट लूज अ लॉट, बट एक बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव आ गया, 20% का मूव आ गया, देन इट्स नॉट गोइंग टू it's going to take larger effect in the option prices than the volatility effect. Got my point? But एक expected move आ गया, let's say 4 to 5% is, अगर 4 to 5% का move आता है Infosys में, which is expected 3 to 4 to 5% कुछ भी एक move आता है, then the your strategy should be making money, selling volatility strategy should be making money, or else you should lose some. That's what the strategy says. As far as in ICICI Bank goes, अब ये ICICI बैंक में बेचना, ICICI बैंक और Infosys दोनों का IV परसेंटाइल इज हाई, किसको बेचना चाहिए? Which one should you sell? Any guesses? Everything is, you know almost everything by now. Which one should you sell, or which one you should not sell? In ICICI Bank, should you be selling because इतना कुछ हो रहा है उसके अंदर, you don't know what can happen next. But Infosys में you may take an choice. पर यही अगर ये विशाल सिक्का वाले दिन होते तो you will not have been selling Infosys strategy. Look, it is the individual's choice. किसको सेल करना है, किसको बाई करना है, it is individual choice. The risk you can assess very well for yourself also. For me personally, if you ask me where I am comfortable, if I have small position to take, I can take a sell position in Infosys easily. If I have to take a very large position, large means a really good large position, I will take a selling position in Infosys after the result. Personally, we take small position in Infosys results, but large position after results. IVs उसके बाद गिर चुकी होती है, but और भी गिरती है. IVs fall, and if there is nothing large market moving effect into Infosys, they fall a lot afterwards also. So for me, Infosys IV position taken on the result date with large position is important. If I'm taking a small position, I can take in the before result also. So it is about the position sizing. It is not about the when to sell. When to sell is really the question. Obviously, when you sell before expiry versus after expiry, the price difference will be a lot. अभी 70 का प्राइस मिल रहा है, like after expiry आपको 45 का प्राइस मिलेगा to sell. But 70 से 45 का straddle में the strike price might also change. So confidence of selling
confidence of selling Infosys Straddle before twelfth and after 12th are going to be different. 12 के पहले बेचिए और 12 के बाद बेचिए, उसमें दोनों में डिफरेंस रहेगा. So that is how you employ strategies. तो ये एक डिसीजन हो गया, मेरे को हाई implied volatility percentile का बेचना है. Generally what happens is if you go into earnings season, most of the stocks before expiry, before earnings go into high implied volatility percentile. ठीक है, जैसे अभी इन्फोसिस है, थोड़े दिन पहले टीसीएस भी था. सो कंपेयरिंग ऑफ स्ट्रेडल वैल्यू हेल्प्स. इन्फोसिस में अभी आप धीरे धीरे देखें इम्प्लाइड वॉल 40 तक पहुंचेगा. इफ द स्ट्रेडल रिमेन्स अराउंड 68 to 70, the implied volatility by 12th will reach to 39-40%, which is the historical implied volatility that we have seen. And वहां पे जाके उसको बेचना या लेना is easier. This was part of Infosys, but comparing straddle value is easier versus comparing implied volatility is easier. Both are tough. Within the same stock. My question is, comparing IVP implied volatility versus comparing straddle. What makes ATM straddle basically? What makes sense to you? Or what makes what's easier for you? Obviously, comparing IV is easier any day. If you understand it, comparing IV is easier because you don't have to do it. Somebody else is doing it for you for free. So that's easier for you. And you will do it on your own also. So this is comparing IV. ATM straddle. Why I insisted on ATM straddle. The reason was till then we had not completed IVs as such, and seeing the straddle values helps you understand what is happening there. Now you are able to relate it to what is happening in Infosys and why IV percentile is higher. That's my opinion, that it is easier to relate after you see the straddle values. 70 ka 70 70 70 every day, it means IV is rising. There's nothing else that is happening because time value has to hit it. And it didn't happen. Now, as far as ICICI Bank goes, implied volatility percentile is high. There is news in the stock. Implied volatility percentile is high. There is news in the stock. What are the possible trades? Let us discuss in this case. What are the possibilities according to you, according to me? You can rectify. This is my opinion. This could be different from you, different from what you think. One, if ICICI Bank is not going to announce its result in this month. Clear? That is my past understanding of the ICICI Bank. So because of result, ICICI Bank IVs are not going to rise. Point number one. Point number two, there is a case going on against ICICI Bank, and people are searching for the cases and XYZ things. So ICICI Bank's IVs are going to be high as it is in the news, like the case of PNB, as that was in the news. Second, point number three,
if these are the scenario, the rise in ICICI Bank is going to be limited for the time being. There could be fall, a great fall, I don't know, but the rise is going to be limited. Rise in ICICI Bank prices. I'm talking about the prices now. Those who understand a little of technicals also can look at the charts and tell me about the levels and where it should, where the line of resistance is there. Great line of resistance is there. Point is, if the news is the reason behind the implied volatility of ICICI Bank, even if let's say they clear Chanda Kochar of the current scenario, which now has involved government agencies and all, which may take time. The board has said the pros, the good part is there from the Chanda Kochar side. The bad part from the government side is there. There could be reasons behind this, but what will happen to this? What can happen to this stock prices currently? So why am I talking about prices? I'll come a bit later. The fall, if it happens that yes, she is proven guilty, there is a lot more froth in the ICICI Bank, the ICICI Bank can fall down a lot. That's a possibility. Chanda Kochar is blameless. Kuch bhi nahi, everything was right, proven. How much time should it take at least? कितना समय लेना चाहिए इस चीज को आने में? 7 दिन, 1 दिन, मंडे को आ सकता है, सीबीआई मंडे को क्लियर कर सकता है उसको. So there could be number of days. In my opinion, there could be, it could take 5 to 7 days to a month so it will take time for her reputation to build, to rebuild again. Same is the case with the ICICI Bank. What if the board replaces CEO? What if the board replaces CEO? That means there is something else in the ICICI Bank also. So all this thing will keep the rise in check. In check का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जाके वो resist करेगा अपने इस price को. The calls on the higher side, it should be it's not going to be easy ride for ICICI Bank in the coming days. That's my opinion as far as direction goes. Although I'm not bearish with ICICI Bank, I'm not bearish in ICICI Bank, but that's how the market is perceiving right now. How can you make this trade? Can you make any trades in call options? The answer is yes, there are choices in call option. If I create some strategy wherein I profit from the rise and profit from the sell in volatility and don't lose in the fall. The point in ICICI Bank, there are two things. I should not lose from the fall in prices. This is one objective. I should make money in volatility fall. I should make money in ICICI, in rise of ICICI. With ICICI Bank, can I conclude this as a trade objective? It's not necessary for you to follow, but looks like a decent trade. The risk reward in this trade are not going to be. इस केस में आप ICICI बैंक में फ्यूचर में पोजीशन लोगे नहीं.
ज्यादा से ज्यादा पुट में पोजीशन ले सकते हो या फिर कॉल में कुछ पोजीशन ले सकते हो। पुट में सेल का पोजीशन नहीं लोगे, कॉल में कुछ एक पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ सिनेरियो आल्सो कि दोनों में क्या डिफरेंस है ट्रेड्स में व्हेन वी डू द स्ट्रेटजी। तो इन दोनों सिनेरियो को ही आगे लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Now any questions you guys have with respect to IVP and IV rank? As far as data is concerned, IVP IVR का data आपको मिल जाएगा। IVP is more, we use more than IV rank, and और historical volatility का data, if somebody wants to maintain, I will explain the process कि कैसे आप उसको कर सकते हो। Let me find out कि उसका कोई और alternative है क्या कहीं पे। The next flow of the class will involve, now we will try to understand Greeks. And one rule of sticky delta, इसको मॉडिफाई करके अपने पढ़ेंगे। एंड उसके बाद इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला के वी विल अंडरस्टैंड कि क्या कैसे ये चीज़ें बना सकते हैं अपने। दिस इज गोइंग टू Naresh ji has a question. Option should be traded on what time frame? It's a question. दो तीन क्वेश्चन जो होते हैं कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं, like this one. पहला क्वेश्चन, option should be traded on what time frame? Second question, sir, what is the capital that is needed for option trading? These are a couple of questions that is individual specific. What is the return that I should expect from the options? 3 questions. These are very individualistic questions. As far as my time given to the market is concerned, I can talk about myself and I can discuss a bit about other people also of the past students. I consider myself a trader, option trader or whatever trader you say, but I'm more of a trader. So I will employ every single strategy which is making money in the markets. One, I use 99% of my book with options. चाहे वो मेरे को directional call लेना हो या non-directional call लेना हो या कुछ भी करना हो, I try to use options a lot. That gives me a flexibility in terms of size, in terms of leverage. So that is where I'm good at. I personally think so, and that is what looks me a scalable trade than anything else. Options or any other instrument should have two things. Should be traded with two things in mind. Either you have large points to eat, or you have either the points are large in your trade or the points are small in your trade. If the points are large, the position sizing is small. If the points are small, the position sizing has to be good. So अगर आपने फ्यूचर लिया है और फ्यूचर में आप 10 पॉइंट्स एक्सपेक्ट करते हो एंड वही सिमिलर रिस्क एपेटाइट होने के बाद आप अगर ऑप्शन भी एक लॉट लेते हो जैसे आपने फ्यूचर लिया था, then your risk you are not doing justice to your risk appetite. Clear? Time frame wise, the earlier I get the exit, the better for me. But not all strategies are made to exit early. Not all strategies. Like
डायरेक्शनल कॉल मिला इंट्राडे के लिए मेरे को मिला, सो आई विल यूज दिस इंट्राडे. नॉन डायरेक्शनल कॉल है like Infosys, I'm keeping the trade for 3 days and I will tell you about how gamma scalping can help in that. So these are ways to do it. Butterfly का trade है, so butterfly के trade में I will be doing in and out with some trade. What the benefit of option versus benefit of position sizing is that sometimes we also don't know what is the right place to book profits or book losses. We also don't know. So we do a partial profit booking or partial losses. That helps in keeping the position and riding the trade further. उसमें नुकसान भी होता है, उसमें profit भी होता है. So that is there. Another important point which is really very important, options. As far as options is concerned, if you are trading naked options, profit खाना बहुत important है than loss खाने से, loss देखने से. If you are in profit and you are not booking your profits, that profit might turn into losses, which has been the case with a lot of people. Long naked options may profit, eating the profit is far more important than booking, talking about stop losses. Yeah, these are some of the things that I have. As far as risk appetite is concerned, strategy wise, if you do analysis of returns by comparing percentage returns on the margin employed versus the percentage return that you got, it is the right comparison for your strategy. कि कितना आपने रिटर्न बनाया, कितना आपने मार्जिन एम्प्लॉय किया, दैट इज द राइट वे टू लुक एट इट. ठीक है. लेट्स गो अहेड. और shall we go for a break? ग्रीक्स अपने स्टार्ट करेंगे. So do you guys need a break or shall we start? Okay, this is a 15 minutes break. Please refill and refresh yourself as if you are coming fresh in the class. This is a 15-minute break. Kindly use this time to refresh yourself, because we are going to do some interesting things going forward. Okay, chalo. Meet you after 15 minutes.
Okay, for the part of 4 minutes that is left in the break, I'm unmuting Vahid ji. Vahid ji, what do you do, Vahid ji? And you can unmute yourself and speak. Let's see if it goes. Yeah, this is a very good question that has come. Fantastic. Like this. This is a fantastic question. Thanks. I will be taking this.
So let's start. I guess सब वापस आ गए हैं. So let me start. And there are a couple of questions that I've got, and this is a very interesting question, and I'll take this in a while. एक बार Greeks explain करके, please remind me if I don't take this question. So एक बार Greeks explain करके, I'll come to this question another. In fact, once we explain Greeks and gamma scalping जब होगा तो वो मैंने जो Infosys trade है मैं उसी को explain करूँगा कैसे मैंने किया है. Okay, so let's start with Greeks. और other question जो भी हैं, I will take them up. थोड़े से देना. एक बार Greeks से चालू कर. Greeks. Greeks are what? Risk measures. किस चीज का रिस्क मेजर करते हैं? रिस्क लिया ही नहीं मैंने तो क्या मेजर है? मैंने रिस्क लिया ही नहीं तो मेजर क्या चीज का करना है? रिस्क कैसे नहीं लिया सर? Let me talk about the strategy that I employed. Right now, forget about the market. मेरी strategy is spread into 9900, 9800, 9800, 10,000, 10,100, 10,200, 300, 10,400, 10,500, 10,600. So ये P, C, yes, sorry, yes, C. P is pick put and C is call. और ये है -10,000, -5,000, प्लस 18,000, -3,000, -8,000, प्लस 3,000, -7,000, -12,000, प्लस 38,000. सर कोई बताएगा कि मेरा प्रॉफिट कब होगा? निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? गलत बात है, भगवान बता सकते हैं. Can anybody tell me? You can avoid you can decrease the number of zeros, but if you have large capital to employ and you आप किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, और जैसा जिसका कैपेसिटी है वो उस हिसाब से ट्रेड लेता है. So if somebody has X amount of money, forget about the money. If this is the position he has, would you be able to understand what is the portfolio? What will the portfolio do in case market goes up by 100 points, or days go by 5 days, or volatility increases by 3%, or for that matter interest rate? Is it possible for anyone to calculate and do it continuously? The answer is no. The actual answer is no. The answer to this lies in the formula of Black-Scholes option. Black-Scholes options provides you a couple of risk measures, which are delta, gamma, vega, theta, rho. It provides you that. Basically, it is the risk measure of your portfolio given there is a rise or fall in one of the inputs, keeping other inputs constant. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ऑप्शन प्राइसेस के लिए अपने को 5-6 इनपुट चाहिए होते हैं: स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, इंटरेस्ट रेट, वोलेटिलिटी. So these are 5 to 6 inputs that we need for finding the option prices: spot, strike, time, interest rate, volatility. These are the 5 inputs that we need in order to arrive at the option prices. तो रिस्क अपने को किसका मेजर कर रहे हैं? ऑप्शन प्रीमियम का रिस्क मेजर कर रहे हैं, और तो किसी चीज का रिस्क मेजर नहीं करेंगे. नॉट मेजरिंग एनीथिंग एल्स.
we have to measure the risk of option prices being XYZ in next minute or next day or next month. क्या हो जाएगा ये price? That's what the risk is, and this price is dependent on these 5 factors. So if I break it one by one, that is, I change one factor keeping other factors constant, and I see the changes in the option price. So I will be able to conclude the change in option price given every factor changes one set ago. मतलब अगर मैंने देखा खाली स्पॉट को चेंज किया, बाकी किसी को चेंज नहीं किया, तो ऑप्शन के प्रीमियम में जो चेंज आएगा आई विल नोटिस दैट. फिर स्ट्राइक प्राइस तो कांस्टेंट होती है, उसको चेंज करने का मतलब नहीं है, तो ये तो पहले ही डिलीट हो गया. जो डायनेमिक फैक्टर है उसी को चेंज किया जा सकता है. टाइम एक दिन चेंज हुआ तो ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आया, आई नोटिस दैट. नाउ इंटरेस्ट रेट में चेंज करने से कितना चेंज आया ऑप्शन प्राइस में, आई विल नोटिस दैट. वोलेटिलिटी को चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग एल्स, कितना चेंज आएगा, आई विल नोटिस दैट. एंड उसके बाद वंस आई नोटिस that changing volatility by keeping everything else constant, what is the change in the option price, I will be able to arrive at some conclusion. Once I have these all figures, I can give a conclusion to approximate conclusion to a situation like this. Okay. How will that happen? This will happen with the help of Greeks. ठीक है, देयर आर फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स, देयर आर सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का. स्पॉट से रिलेटेड जो ग्रीक्स होता है, स्पॉट के चेंज को जो नोटिस करता है, दैट ग्रीक इज कॉल्ड डेल्टा. टाइम के चेंज को जो नोटिस करता है, दैट ग्रीक इज कॉल्ड थीटा. इंटरेस्ट रेट के जो ग्रीक को नोटिस करता है उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी के जो ग्रीक्स को नोटिस करता है उसको बोलते हैं वेगा. अभी एक बार ये 4 ही देखते हैं. ठीक है, 4 क्या, इनफैक्ट अपने को 3 ही देखना होगा. डेल्टा थीटा वेगा इज आवर फोकस एरिया. आवर फोकस विल बी डेल्टा थीटा वेगा, स्पॉट टाइम वोलेटिलिटी. इंटरेस्ट रेट विल नॉट बी फोकस, कारण बाद में बताया जाएगा. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद डेल्टा एंड स्पॉट. व्हाट इज डेल्टा? डेफिनेशन: change in option premium divided by change in underlying or spot. व्हाट इज डेल्टा? क्या कैलकुलेशन होगी? ऑप्शन प्रीमियम में जितना चेंज आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय स्पॉट में कितना चेंज आया. 1 रुपया निफ्टी अगर हिलेगा तो ऑप्शन प्रीमियम 10,200 का कितना हिलेगा, दैट विल बी इट्स डेल्टा, नॉट इन परसेंटेज बट इन एब्सोल्यूट. ठीक है, which means अगर डेल्टा इज 0.5 and change in the underlying अगर 10 रुपए से हिला है, अंडरलाइंग में अगर 10 रुपए से चेंज हुआ है तो उस ऑप्शन में 10 into 0.5 का चेंज आएगा. 10 into 0.5, 5 रुपए का चेंज. ऑप्शन प्रीमियम गिरना चाहिए. If delta is 0.5 and change in underlying price is 10, then what will be the upper one? This into this. ये इधर जाएगा. Change in underlying price into delta will give you change in option price. That is what I am seeking. The change in option price will be +5. That's the definition of delta. This is calculated by keeping other things constant. और कुछ हिल नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन प्राइस के प्रीमियम को
विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग प्राइस के प्रीमियम को नोटिस करके जो चेंज आया वो लिखा जा रहा है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस इन दिस? किसी को इसमें डिफिकल्टी है डेफिनेशन में? आई डाउट सो। Okay, now properties of delta, which is important. Properties of delta one by one करके करेंगे। If underlying price बढ़ता है तो कॉल का प्राइस क्या होता है? बढ़ता है या गिरता है? If underlying rises, the call option premium rises. The absolute change, the change in both the numerator and denominator is positive. So call delta will always be a positive number. If underlying बढ़ेगी तो ऑप्शन प्रीमियम गिरेगा पुट में। क्यों? If underlying rises, the put option premium will fall. The change will be negative and this positive. So put delta will always be a negative number. Range of delta for call option, we say for any options we say, can the option is the derivatives of the underlying, can it rise faster than the underlying? Can any of the option rise faster than the underlying? Faster means अगर underlying 1 रुपया बढ़ रहा है तो option 1 रुपया से ज्यादा बढ़ेगा. Does it happen? No, it doesn't. The range in that case always in the options segment is from 0 to 1 for call option delta. 0 से 1 के बीच में रेंज होता है. 1 का मतलब हो गया ऑप्शन 1 अंडरलाइन 1 रुपया बढ़ेगा तो ऑप्शन भी 1 रुपया बढ़ेगा. 0 का मतलब हो गया नहीं बढ़ेगा. For put option it will be -1 to 0. 0 से लेके -1 तक रहेगा डेल्टा. फ्यूचर्स का डेल्टा और स्पॉट का डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू 1. जितना बढ़ेगा, जितना स्पॉट बढ़ेगा उतना फ्यूचर बढ़ेगा. फ्यूचर का डेल्टा निकालते हैं, स्पॉट का तो निकालते नहीं. फ्यूचर्स का डेल्टा विल ऑलवेज बी अप्रोक्सीमेटली ऑलवेज बी इक्वल टू 1. Now this property is important. Delta has an additive property. Additive property says, let's say 10,400, 10,500. Call का delta is 0.4 and 0.3. Let's say, just for example, you buy 1,000 shares of that and you sell 2,000 shares of that. You buy 1,000 and you sell 2,000. So additive property says this into this into this
your net delta will be the sum of these. आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद ऐड करोगे तो ये नेट डेल्टा ऑफ द अंडरलाइन बता देगा आपको. Next and very important property for same strike. क्या है? Absolute call delta and absolute put delta added together will always be equal to 1 for same strike price. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 10,400 call and put. Call का delta is always a positive number. Call का delta is always a positive number and put का delta is always a negative number. But while for this strategy, if I add the call and put delta in absolute value, ignore the positive and negative sign. Ignore the positive and negative sign. The total will always be equal to 1, which means if the delta for this is 0.6, the delta for this will be minus 0.4. If the delta for this is 0.2, the delta for this will be minus 0.8. Because if you add them together in ignoring the minus sign, it will always be equal to 1. Got this point? इसीलिए when we used to do P plus F equals to C plus S, where S is strike price, you will see अगर P का delta is 0.6 plus P का delta is minus 0.4 plus 1 will always be equal to 0.6. Plus strike का delta नहीं होता, मतलब for the same strike price. That this will always help too. So put call parity को prove करने का ये दूसरा तरीका है. Clear? So what does this actually means delta में? सर अगर डेल्टा किसी ऑप्शन का 0.3 है, लेट्स से किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.3 है और मेरे पास उसके 2000 शेयर्स हैं, सो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? क्या हुआ इसका मतलब? उस कॉल ऑप्शन के 2000 शेयर्स हैं, इसका मतलब हुआ you will be getting an approximate exposure of this into this, that is 600 number of underlying or spot long. इसका मतलब हुआ कि 600 शेयर में आपके जितने पैसे आते उतना ही ये 2000 कॉल में आएंगे. Got my point? Had you have taken this 600 shares, the money would have been the same in the 2000.30 delta call option. ठीक है? 600 of underline. हाँ, 600 of underline. निफ्टी के 600 शेयर लेते या फिर लेट्स से 10,400 का कॉल का डेल्टा इज 0.3,
तो 10,400 का 2,000 कॉल लो या फिर निफ्टी के 600 शेयर लो, ये बात बराबर होती। दिस वुड हैव बीन सेम। नाउ another property is delta keeps on changing। ये क्या है? No, Girish ji, no other words. No, in other words, this is not the premium will rise by 30%. This is not that. I'm not saying that. What I'm saying is 600 शेयर निफ्टी में आपके जितने पैसे आते उतना ही उस 2000 शेयर कॉल में आएंगे, आने चाहिए। अगर 600 शेयर में आपको 30 रुपीज करके आया लेट्स से, तो यू मेक 18,000 रुपीज। लेट्स से आपको 30 रुपीज है, तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली दिस डिवाइडेड बाय दिस 9 रुपए आने चाहिए इस ऑप्शन में। इसका प्राइस अगर 30 रुपीज इंक्रीज करता है, इस शेयर का प्राइस, इस अपने जो अंडरलाइन का प्राइस 30 रुपीज इंक्रीज करेगा, तो आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस 9 रुपए इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज योर डेल्टा वाज 0.3। क्या डेफिनेशन था? चेंज इन ऑप्शन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन अंडरलाइन प्राइस। तो अंडरलाइन प्राइस रोज बाय 30 रुपीज, डेल्टा वाज 0.3, so the option price change will be 9 rupees. That's how the calculation is. ठीक है? Now the tough part, not the tough part but the different part. The delta keeps on changing. What does this mean? कि जिस चीज का डेल्टा अभी 0.3 है, थोड़ी देर बाद वो 0.35 हो सकता है या 0.25 हो सकता है। उसके थोड़ी देर बाद वो 0.4 भी हो सकता है या 0.15 भी हो सकता है। तो सर आई स्टार्टेड विद 0.3 डेल्टा, उस समय 2000 शेयर था लेना। अभी अगर इसको आप 0.4 कर दोगे तो ये 800 शेयर हो जाएंगे। तो ये तो चेंज हो गया, पहले 600 शेयर का एक्सपोजर था, फिर अब 800 शेयर का एक्सपोजर हो गया। अभी ये डेल्टा 0.5 हो गया तो ये 1000 शेयर हो जाएगा। द आंसर इज यस, एकदम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट डेल्टा इज। डेल्टा कीप्स ऑन चेंजिंग। एज द स्टॉक प्राइस विल चेंज, द डेल्टा विल कीप ऑन चेंजिंग। तो सर हम क्या करें? अंडरस्टैंड द डेल्टा, कि डेल्टा होता क्या है। किसी भी ऑप्शन के भागने की स्पीड, डेल्टा क्या होता है? कोई भी ऑप्शन कितना स्पीड से भागेगा उसको बोलते हैं डेल्टा। और द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्ट्राइक विल रिमेन इन द मनी, will get in the money, will become in the money around the expiry, this is that delta. तो दोनों तरीके से सोच के देखते हैं। 10,500 पे निफ्टी चल रहा है, ठीक है, और अभी 10,500 की स्ट्राइक का अपने को डेल्टा देखना है। तो यहां से निफ्टी का बढ़ने और गिरने का चांस क्या है? 50-50. Probability is 50-50. The probability of this going in the money is 0.5. The delta for ATM will always be 0.5. $10,600, $10,700, $10,800, $10,900. This option will rise in prices in a lower speed than this. In a lower speed than this.
question comes in, the delta number can be greater than 1 also, the answer is no. 10,500 कॉल 10,600 की कॉल से ज्यादा स्पीड में भागेगा? एब्सोल्यूट नंबर में बोल रहा हूँ, परसेंटेज डोंट कैलकुलेट। एब्सोल्यूट नंबर में 10,600 से ज्यादा स्पीड में भागेगा 1, delta should be lesser in this. Another point, which will go in the money first, which has the chance of going in the money first? 10,500, then 10,400, 600. The probability goes down. Same for this, same for this, same for this. I'm keeping the hypothetical number. Look at the pattern of the number rather than the number itself. The numbers are decreasing. This is for the call option. ATM delta is 0.5, and as you go further in the strike, the delta keeps on decreasing. Generally speaking, this has 20% probability of expiring in the money. If you look at the put delta, since 10,500 कॉल का डेल्टा इज 0.5, पुट ऑप्शन में क्या होगा? दस 500, 10,400, 10,300, 10,200, 10,100, 10,600, 10,700। इसका डेल्टा कितना होगा? इन तीनों का तो इजी है, इन तीनों का डेल्टा निकालना इजी था, और इसके पैटर्न से समझ में आ गया कि इसका डेल्टा -0.4, -0.3, -0.2 and -0.1. This expiring in the money, 10,200 expiring in the money input option has 20% probability, and this has 40% probability. Approximate measures है, ठीक है? So this is how the delta structure is. Clear? Any questions so far? अभी तक डेफिनेशन की है, तो डेफिनेशन इज डेफिनेशन, उसमें क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अभी तक कोई क्वेश्चन है इसको समझने में? Yes, this is a good question. Then what is the strike rate that one should select? Okay, I'm coming to this. How many of you read read about gamma scalping and rule of sticky delta? Anyone who read it? Please mention in the chat box that you read it or not. About it, whether you understood it or not, it doesn't matter. Gamma scalping and rule of sticky delta. No issues if you have not read it, but at least let me see if anyone who has read it.
Okay, Naresh ji, leave it. I'll explain it here only. Abhi thodi der mein. So I'll explain the entire thing. Rule of sticky delta, that is called. Good name, Prashad ji. Chalo. This is what the definition and the properties of delta is. अभी तक जो देखा वो definition and property of delta है. तो अभी जैसे मैंने इन्फोसिस का स्ट्रेडल लिया, ठीक है, 1140 का कॉल एंड 1140 का पुट लिया. डेल्टा विल बी 0.5 एंड -0.5. ठीक है, add them together, delta is 0. If you buy 5,000 quantity or 600 shares, so what will be your net delta? Delta will be this into this, 0. ठीक है, you employ 6,000 shares, delta will be 0. ये अगर 0.65 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा विल बी 1800. अगर 6000 शेयर्स है तो डेल्टा विल बी 1800. इसका मतलब आपके पास 1800 शेयर्स का लॉन्ग का एक्सपोजर है. ठीक है, सो दिस इज द अगर लेट्स से मैं 10,400 का कॉल लिया और 10,500 का कॉल बेचा, 1000 शेयर माइनस 1000, ये बुल स्प्रेड बनाया मैंने. इसका डेल्टा 0.3, इसका डेल्टा 0.15. so this into this, net delta is 150. तो calculation of delta is not a tough task for any one of you. आप आराम से calculate कर सकते हैं. Now point comes थोड़ा सा tricky things. And I'll be first explaining the modification part and then I will be explaining the for that I need help of NSE and the prices. I guess we have taken the prices before. NSE से कहाँ से लेते हैं? चलो इसी प्राइसेस को अपने कैरी ऑन करते हैं. कंट्रोल C, control V, for the purpose of example, just that's all. These are the prices of Bank Nifty 12th April expiry prices. Clear? Taken from nseindia.com. Now let me ask you, currently Bank Nifty क्या चल रहा है? 24,873. I'm taking the spot in this case. बैंक निफ्टी आज का दिन अभी तक रनिंग है. मान लो ये लास्ट डे का प्राइसेस है, लास्ट डे रनिंग है. बैंक निफ्टी 24,973 हो गया. व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस कॉल ऑप्शन? अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ दिस कॉल ऑप्शन कितना होना चाहिए? कोई बता सकता है? 24,900 की कॉल का ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा? very I need a price, approximate price I need. Give me a price. My question is that
Bank Nifty, these are the closing prices of Friday. While the closing price of Bank Nifty is this. Let's suppose the Friday is continuing. Friday has not stopped. Bank Nifty rose by another 100 points. Now, what should be the approximate price of this call option? This call option, इन दोनों कॉल ऑप्शन का प्राइस अप्रोक्सीमेट बताना है आपको. अप्रोक्सीमेट प्राइस बताना है तो सोने का कोई जरूरी नहीं है. नो नेसेसरी दैट यू नीड टू बी एक्यूरेट. कितना होना चाहिए? एंड आई गेस एवरीवन शुड पार्टिसिपेट. दैट्स नेसेसरी. So I'm getting different answers. 155 plus 73, 200 to 170, 220 approx. And there is one more answer. I'm not getting the name. There. Somebody mentioned 201 and 155. May I know who's that? Kanan sir, thank you. So there are a couple of Vijay ji has an answer of 63. So thanks for participating. So let me give you my logic. इस टाइम पे इसका प्राइस 201 है, इसका प्राइस 155 है, इसका प्राइस 114 है. यहां से 100 रुपया बढ़ेगा तो ये वाला प्राइस शुड बी टेकिंग अ गेस और हिंट फ्रॉम दिस प्राइस. इससे 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस ऊपर कौन है? इस टाइम पे जो ये प्राइस था वही इस टाइम पे ये प्राइस होना चाहिए. माई बेस्ट केस अप्रोक्सीमेशन कि 24,873 में अगर ये प्राइस 201 रुपए है तो 24,973 में ये प्राइस 24,900 का प्राइस 201 रुपया होना चाहिए या नहीं? Best approximation I'm asking. Is there any guess, any better approximation you have? 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 100 रुपये ऊपर वाला प्राइस आ जाएगा, ये 100 रुपया बढ़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा और बढ़ेगा ये इसके ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा. 200 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 200 हो जाएगा, ये 155 हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? Getting my point? My point is 100% point rise in the bank nifty will shift the prices, should shift the prices like 100 points ऊपर ये सारा prices roll कर जाना चाहिए. That is the best approximation I have. Yes or no? किसी को इसमें अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी है तो बोलो.
there is a question that delta also changes. Naresh ji has a question. Delta also changes. नरेश जी, इस टाइम पे जो इसका डेल्टा है, मैं उस पे आऊंगा. इनफैक्ट आप जो पॉइंट बोल रहे हो वही ये पॉइंट मैं इस पे मेंशन करना. इस टाइम पे जो इसका डेल्टा है वही इस टाइम पे इसका डेल्टा होगा. So that is my point. In fact, that is the rule of sticky delta. अभी उसके रूल को ही समझने के लिए पहले मेरे को ये समझाना जरूरी था. इस लॉजिक से कौन कौन डिसएग्री करता है? Anyone who disagrees with this, I would like to hear the logic. अभी तक रैंडम था आंसर. अब anyone who disagrees, मेरे को please raise your hands or type in the chat box your concern. That you didn't understand, it's a different thing, but you disagree is a different thing. Please type in the chat box that you didn't understand, so I'll repeat, or if you disagree then we will have a discussion, otherwise we will go ahead. So let me go ahead. I hope everyone agrees with this. The point is, ये 201 हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, नहीं सर, ये 155 हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा एंड ये 25 हो जाएगा. अगर 200 पॉइंट का राइज होगा तो ये 201 हो जाएगा, ये 155 हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ. दिस इज दी, वो बोलता है ना, टूटा फूटा लॉजिक यही बोलता है. कुछ नहीं दिमाग लगाना है तो यही होगा. 100 पॉइंट राइज होगा तो ये भाव यहाँ आ जाएगा, 200 पॉइंट राइज होगा तो ये भाव यहाँ आ जाएगा. दैट्स दी लॉजिक. नाउ लेट मी पुट दिस इन दी एक्चुअल फॉर्मूला. अभी तो ये जब 24,973 दिख रहा है, कल को ये बढ़ के 35,973 अगर हो गया तो भी इसी तरह से जाएंगे. द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. The rule says two four nine 873 the rule is at this price this has xyz. इसका मान लो डेल्टा 0.7 है, इसका डेल्टा 0.6 है, इसका 0.52 है, इसका 0.41 है एंड इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी एक कर्व में रहती है. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज लेट्स से 21%, 20.5, 20, 18.95, 17.85. I'm taking the random numbers. The rule of sticky delta says that once the change in delta happens, that अगर ये बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ा 100 पॉइंट बढ़ा तो ये 201 का ये 155 का 201 हो गया, ये 0.6 डेल्टा वाला 0.7 डेल्टा हो जाएगा, 0.6 वाला 0.7 डेल्टा हो जाएगा. क्लियर? ये 0.7 डेल्टा जब होगा तो क्या होगा? 0.7 डेल्टा के टाइम पे जो इसका वोलेटिलिटी था, 0.7 डेल्टा के टाइम पे जो इसका वोलेटिलिटी था, that will be the same volatility when this become 0.7 delta. That will be the same. The volatility will be taking the place, will also shift. If there is a shift in delta, the volatility will also shift. इसका 0.7 था, ये 21 था तो ये भी 21 हो जाएगा, ये 0.6 के साथ 20.5 था तो ये भी 20.5 हो जाएगा. अपने उतना ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाते हैं.
in terms of what is volatility running and what is, तो इसी का मॉडिफिकेशन रूल अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखे थे. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ स्टिकी डेल्टा, जो मैंने ये डेल्टा के हिसाब से बताया, और इससे पहले जो 100 एंड 200 पॉइंट्स वाला सीखे थे, दैट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट. क्योंकि अपना जेनरिक अपने करंट एग्जांपल में व्हाट वी आर एबल टू सी इज द शिफ्ट ऑफ द स्ट्राइक, शिफ्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्सेस शिफ्ट ऑफ द ऑप्शन प्राइसेस. तो यही अपने को देखते हैं. तो ये प्राइस अप्रोक्सीमेटली 201 हो जाएगा और ये प्राइस अप्रोक्सीमेटली 155 हो जाएगा. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फॉर डेल्टा, फॉर द रूल ऑफ स्टिकी डेल्टा. यही एक रूल. एंड फॉर n number of strategy that you are going to approach or do, this is one of the logic that is implied everywhere. हर जगह इसका काम आएगा आपको, this logic, and we will see how. इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है कि 100 पॉइंट बढ़ा तो ये प्राइस 201 हो जाएगा और ये प्राइस 155 हो जाएगा. कहां पे ये अप्लाई हो सकता है, कैसे अप्लाई हो सकता है? व्हाट इज दिस प्राइस? कॉल का 200 पॉइंट्स का बटरफ्लाई है. क्लियर? कॉल का 200 पॉइंट्स का बटरफ्लाई है, ये अपने अभी सुबह किए थे. नाउ एवरीबडी आंसर मी दिस. निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा, तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस बटरफ्लाई? इफ बैंक निफ्टी rises by 100 points, what will be the approximate price of this butterfly? Guys, you are taking too much time. Sangeeta ji, you are right. Yes, Nirmal ji, you are right. Almost right. I mean, that's the best approximation I also have. मैंने ये पूछा है, मेरा क्वेश्चन मैं लेट मी रिपीट. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बटरफ्लाई विच इज 13.2, विच इज 200 गैप ऑफ बटरफ्लाई ऑफ 25,200, 25,400, 25,600. इसका मैंने बटरफ्लाई किया था, यू रिमेम्बर दैट? एक लेके दो बेचा, एक लिया. सो माई क्वेश्चन इज what will be the value of this butterfly once the underlying rises by 100 points? ये 13 रुपए 20 पैसा का बटरफ्लाई का क्या कॉस्ट, क्या वैल्यू हो जाना चाहिए इफ अंडरलाइंग 100 पॉइंट से राइज करता है? तो गिरीश जी, यू देयर? बताइए. नरेश जी, विजय जी, वाहिद,
everyone, we will not move till everyone answers. नरेश जी, you don't need to use to it. मतलब अभी जितना हुआ है उसी में आपको आंसर देना है. अभी अपने जितना पढ़ रहे थे उसी में आंसर देना. If you are not concentrating for last 10-20 minutes, this is possible when you are online. So this could be the reason. Otherwise, मेरे ख्याल से I've tried to explain it. You have to apply the rule of sticky delta कि 100 पॉइंट अगर बढ़ा तो 100 पॉइंट ऊपर वाले का प्राइस लेना है. That's all. तो यहाँ पे 13 रुपए 20 पैसे एक कॉम्बिनेशन का प्राइस है. This is price for a combination. The combination is 54.25 9.2 in 1-to-1 का कॉम्बिनेशन. तो 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये इसके ऊपर वाला कॉम्बिनेशन का प्राइस ले लेगा. 200 पॉइंट बढ़ेगा तो इसका प्राइस ले लेगा, and so on so forth. Can you relate with this? Can this sink in, or has this sink in with you? Because this is one of the important logics to understand कि मेरे कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे लगेंगे. As far as time and मतलब टाइम वैल्यू को समझना तो बाद में होता है, बट 100 पॉइंट बढ़ने में मेरा कितना पैसा आएगा, कितना पैसा लगेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट. Are you able to relate it? Or let me repeat again. The point is, ये प्राइस कितनी हो जाएगी अगर अंडरलाइन 100 रुपए से बढ़ा. ये प्राइस 155 का 201 अप्रोक्सीमेटली हो जाना चाहिए. This is the approximation. If you've got this means it is taking the previous strike price prices. So whatever combination I do, that will also take the previous strike price combinations. That will also take the previous strike price combination. So that is what the approach to a lot of trading strategy, relative pricing that we call, कि इस ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाना चाहिए. That will come from the what the previous strike price prices are. ठीक है. इसीलिए मैंने ये पूछा कि if right now let's say I do this strategy, मैंने ये 25 100 300 और 500 वाला किया 21 रुपये 50 पैसे में, विद अ व्यू. मेरा जैसे बटरफ्लाई में क्या व्यू रहता है, अपना व्यू का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता है, बट वी वांट टू एम्प्लॉय द स्ट्रेटजी कि इसमें नुकसान लगने को कम है, आने को ज्यादा है. तो अगर यहाँ से 200 पॉइंट बढ़ता है तो मेरे पास कितने रुपए आने को है, 14 रुपए आने को है. 21 का 35 रुपया हो जाएगा, एंड 200 रुपए नीचे चला जाएगा. तो लेट्स से ये 13 है तो 7 मान लेते हैं, तो 14 रुपए चले जाएंगे मेरे. तो इज दिस अ गुड स्ट्रैटेजी टू डू कि 200 रुपए से पहले 100 पॉइंट में मेरा स्टॉप लॉस कट है तो मेरा 8 रुपया लगना है. इज दिस अ गुड स्ट्रैटेजी टू डू और नॉट? ये कंपैरिजन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है व्हेन यू डू दिस एनालिसिस. Got this point? So this is the rule of sticky delta. Clear? इन्फी ट्रेड मजा आएगा. क्या ट्रेड था, ट्रेड वाइज अपने डिस्कशन करते हैं. ठीक है, लेट मी ओपन द चार्ट्स.
Infosys Limited. The chart will be for 15 minutes. और अपना ट्रेड का कब लिया हुआ है? ऑलमोस्ट यहाँ पे लिए थे क्या? कितना तारीख को लिए थे अपने ट्रेड? नहीं, ओके, पहले ही ले चुके हैं. When did we first discuss the Infosys trade? Anybody remembers? अपने तो पिछले वीक में लिए थे, पिछले से पिछले वीक में अपने डिस्कशन कर रहे थे. अप्रैल, let's suppose this was the date. 7th से पहले लिया हुआ ट्रेड तो उससे पहले लिया हुआ है. 7th तो लास्ट डेट था. मेरे ख्याल से यहीं पे ट्रेड लिया हुआ है 1 या 2 तारीख को. 72 में जो ट्रेड था, 72 में वी स्टार्टेड द ट्रेड और उसके बाद भी वी वर कंटिन्यू. 70 में भी लिया हुआ है, 72 में भी लिया. नाउ इन्फोसिस के ट्रेड को पूरा समझते हैं, ठीक है. वी विल नीड द हेल्प ऑफ डेल्टा अलॉट. उसके लिए चाहिए optionprice.com. ग्यारह सौ चालीस. लेट्स से इन्फोसिस का एक्सपायरी 4 तारीख से 3 तारीख से अपने लिए थे. 31 को लिया हुआ ना ट्रेड, तो 1 तारीख से अगर अपना ट्रेड लिया हुआ है तो 25 दिन टू एक्सपायरी है. 0 और वी नो दैट इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 62 आ रहा है. तो 36 वी विल ट्राई टू टेक and accordingly we will adjust the volatility. Volatility is let's say 30. कितना हुआ? I'm taking these prices 35.7 and this is the 0.151 delta and this is the 0.484 delta. Please concentrate जो भी numbers हो रहे हैं because this is all about numbers. Date 25 दिन लिया तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल लेट्स से 2 4 18 1140 36 call delta delta is 0.51 minus 0.49. You add them together. Now this is 0.2 delta. Let me use 5 lots. Please allow me to use 5 lots for this. At least as far as Tradal are concerned, we haven't lost 72 का 72 के आसपास ही है. We haven't lost any money. 5 lots are there. So 5 lots means 3000 shares. So the prices are same. We haven't lost money. So 5 lots at 3000 share. You have used. Your delta is 0.6. 60 shares. Any confusion in this calculation till now? अभी तक इस calculation में कोई भी confusion है? मैंने जो किया है? $36 is the price of option. मैंने ये जो 30 की volatility पे IV is 30 36 is the premium. Clear? Next day 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल
what are we delta this way? It needs to be added absolute rate. Absolute adding of delta. Vijay ji has a question कि delta को तो absolute में add करना है. Vijay ji, there is a confusion here. Delta absolute में add करना उस खाली उस प्रॉपर्टी के लिए होता है. अदरवाइज आप उस डेल्टा को इस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है इस दिस प्लस दिस डेल्टा, ये जैसे है उसको कैलकुलेट ऐड कर दो उस प्रॉपर्टी के लिए जहां पे पुट एंड कॉल डेल्टा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. वो वहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपैरिजन करना होता है, अदरवाइज एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना होता है. अदरवाइज दिस इज ए प्लस डेल्टा एंड दिस इज ए नेगेटिव डेल्टा. ठीक है. Now, Infosys since then has come to 1122 and gone to 1150 also. 1122 and 1150. Date is 4th of April and 5th of April. 04/2018 1140. The option premium I am keeping the same prices, or let me change the prices. ये 35.5, ये 35.5. इतना ही हुआ था. डेल्टा कैलकुलेट करना है 1122 पे. इन्फोसिस क्लोज एट 1120 के आसपास, मैं 1125 के आसपास इसका डेल्टा 1125 के आसपास इन्फोसिस का डेल्टा कैलकुलेट कर रहा हूँ. समझ गए ना क्यों कर रहा हूँ? 1125 डेज टू एक्सपायरेशन 24, ये हो जाएगा. पहले तो इसको 35 करना पड़ेगा. 1140 24 में 32 31. Yep. 30.5 will be the IV. IV में कुछ चेंजेस नहीं है. अब मेरे को ये करना है 1125. The delta is ठीक है. Add them together. You have 3000 shares. You have 3000 shares. कितना है? डेल्टा नेगेटिव बिकम्स 300. 300 डेल्टा नेगेटिव है ना. 1120 में जाता है. यहाँ पे 300 शेयर्स नेगेटिव है. यू बाय दीज 300 शेयर्स एट 1125, तो डेल्टा 0 हो जाएगा. बाय 300 एट द रेट 1125, delta becomes 0. This is our objective of keeping being in this trade. मेरा डेल्टा 0 हो गया और मेरे को डेल्टा 0 रखना है. जब तक ये ट्रेड ऑन है मेरे को मेरा डेल्टा 0 रखना है. यही ऑब्जेक्टिव है मेरा. नेक्स्ट है 05/04/2018. कैलकुलेट करते हैं. अपना ऑप्शन का प्रीमियम डिड नॉट चेंज. यही 71 था.
द डेल्टा 5 अप्रैल को क्या हो गया था, ये ऊपर गया 1140 आया, ऊपर में 1150 तक गया, तो 1150 में मैं डेल्टा एक बार कैलकुलेट करता हूँ। .56 and .439, ये क्या आ रहा है डेल्टा अभी 360, मेरे को डेल्टा क्या रखना है 0, मेरे को डेल्टा 0 रखना है। ये डेल्टा जो आ रहा है ये सिर्फ इस पोजीशन का आ रहा है, जबकि ऑलरेडी आई हैव 300 बाई का पोजीशन। इस पोजीशन के हिसाब से मेरे को डेल्टा का 0 रखना है, तो मेरे को 360 का नो, आई नीड टू सेल 360 हियर। डेल्टा फ्यूचर का 1 होता है ना, फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है। अगर न्यूट्रल करना होता है तो क्या करना होता है, डेल्टा को 0 करना है, डेल्टा को 0 करना है, तो यहाँ पे 300 बाई किया। ओके, मैं एक बार लेट मी इलैबोरेट हियर। मैं इस यहाँ पे एक स्टेप में भूल गया आपको बताना। यहाँ पे 300 बाई क्यों किया मैंने, यहाँ पे 300 बाई का रीजन था और लेट्स से 312 जितना मेरा डेल्टा आया उतना ही मैंने पूरा बाई किया। तो फ्यूचर्स का डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, फ्यूचर्स का डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 312 मेरा नेट डेल्टा अगर शॉर्ट था, 312 मैंने शेयर्स खरीद लिए, तो दोनों का डेल्टा, इसका ये माइनस में डेल्टा था, वो प्लस में डेल्टा, तो टोटल डेल्टा बिकम 0, टोटल डेल्टा बिकम 0। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, मेरे को डेल्टा 0 रखना है। तो करंटली मेरा पोजीशन क्या हो गया, 1140 का कॉल पुट एंड 312 शेयर एट द रेट ऑफ 1125। नेक्स्ट डे जब 1150 गया, मैं वापस से अपने पोर्टफोलियो का डेल्टा कैलकुलेट किया। द पोर्टफोलियो विदाउट दिस, ये 312 शेयर के बिना डेल्टा दिखा रहा है 360 शेयर। मेरे को डेल्टा न्यूट्रल अगर करना है तो मेरे को 360 शेयर बेचने होंगे, मेरे को 360 शेयर बेचने होंगे। आई ऑलरेडी हैव 300 शेयर्स, तो मेरे को 360 तो बेचने ही और 300 ये भी बेचने होंगे डेल्टा 0 करने के लिए। तो मेरे को कितना बेचना होगा, $1150, ठीक है। अगर 300 लिया था तो 300 अप्रोक्सीमेट करने के लिए लिया था मैंने, वो 1150। फिर से वो 1150 से गिर के 1125 आ गया, फिर से 1150 से गिर के 1125 आ गया। द सिमिलर स्टोरी विल रन, द सिमिलर स्टोरी विल रन। अभी देखते हैं कि ये वापस से 1140 पे ही रहता तो क्या होता। तो पहला तो ये बाई, मेरा पोजीशन यहाँ पे वो इंटैक्ट है, मेरे पोजीशन में यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है। मैंने पहले जो 300 शेयर लिए थे 1125 में, 300 शेयर एट 1125, इसको मैंने बेचा। ऑल्दो मेरे को और ये 360 सेल 1150, यहाँ पे मैंने इसको, मेरे को 1140 में कवर कर लेना चाहिए था, बट लेट मी ब्रिंग वन मोर स्टेप इन दिस। ये स्टेप यहाँ तक समझ में आया हुआ सबको, मैंने डेल्टा न्यूट्रल किया था। विजय जी एक बार मेरे साथ, no, this is not called repairing of trades, and this buy and sell is into cash market currently.
एंड वेट फॉर अ व्हाइल, एक बार मैं थोड़ा सा लेट मी कंप्लीट दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि इसमें क्या क्या तरीके और किए जा सकते हैं। नाउ ये मेरा जो बाई है, ये मेरा 300 शेयर 1125 पे किया मैंने, वापस से 1140 पे जब ये आता, ये वापस से जब 1140 पे आएगा, बिफोर गोइंग टू 1150 इट विल कम टू 1140, बिफोर गोइंग टू 1150 इट विल कम टू 1140। 1140 के टाइम पे डेल्टा मेरा 0 हो जाएगा, तो मेरे को इस 300 शेयर में मेरे को ये प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलेगा। 1125 शेयर जो ये 300 शेयर लिए मैंने को बोलेगा 1140 में बेच दो, क्योंकि अभी डेल्टा न्यूट्रल हो चुका है इन इटसेल्फ, आपकी इनिशियल पोजीशन आ चुकी है, यही वाली पोजीशन आ गई है, ठीक है। सो मेरे को ये जो 300 शेयर लिए, ये 300 शेयर में बोलेगा 1125 के लिए मैं 1140 में बेचूं, तो यहाँ पे मेरा 15 रुपए का प्रॉफिट बुक, ठीक है। 1150 में 360 शेयर बेचने के लिए आया था, वापस से वो 1140 आएगा, तो ये 360 शेयर में ₹10, ये दोनों, ये भी प्रॉफिट मेरा बुक, ये माइनस में, मेरी पोजीशन वही की वही है एंड मेरा 2 बार ये स्कैल्पिंग हो गया है और वापस से प्राइस 1125 आ गई, तो मेरे को फिर से वो 300 शेयर लेने के लिए बोलेगा। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? अभी तक इसको समझने के लिए किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है क्या? ये कैलकुलेशन समझने के लिए, सिर्फ मैं ये कैलकुलेशन समझने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं। मेरा जितना डेल्टा आया, मेरा ऑब्जेक्टिव था डेल्टा को न्यूट्रल करने का। व्हाट इज द गारंटी दैट द प्राइस यू से विल कम? ये I'm not guaranteeing anything. Even if it doesn't come, it is not hurting you. Your straddle value is same. What you are saying is the Infosys prices will not move from its 1140, मतलब 15-20 रुपए का मूव भी नहीं आएगा Infosys में, if that is what you are saying. Can you guarantee that? One point in this is, even if the move is not coming, you are not losing. You know that you will not lose because the straddle price are not going to decrease since the IVs are about to go high. So that is the basic part of this trade, but the next part is scalping this trade. अभी तो ये छोटा छोटा स्कैल्प किए हैं. Now what if on Monday Infosys gaps down और Infosys gaps up? पॉसिबल है, और हो सकता है 1140 भी खुले, 40 ही खुले. What if Infosys gaps down और gaps up? Infosys gap down किया 1100 1080 पे, या कितना बड़ा गैप अप चाहिए, बड़ा गैप डाउन चाहिए, या छोटा गैप अप चाहिए? एनीथिंग. सो लेट्स से 1100 में किया, दो केस लेते हैं, 1100 का और 1000, एक नीचे का गैप लेते हैं और एक ऊपर का. नीचे वाला गैप छोटा लेंगे, अब बड़ा लेते हैं, ऊपर का गैप छोटा लेंगे. बस मतलब मंडे को कितना तारीख है? 9 17 40. या सो अब मेरे को प्राइस करनी है 1100. Naresh ji is saying
Scalping is good when price is not trending and in consolidation phase. Am I correct? Naresh ji, wait for a while. I'm just giving it a breakout. 1100 is a breakout, or if you want a bigger one, I'll give that one also. 1100 में क्या होता है? Let's see. Calculate कर दें. The delta is 0.33 and 0.668. Control C, Control V, 0.33 minus 0.67. ये बोलेगा अभी मेरा नेट डेल्टा कितना है? 1020 का 1020 का है, तो मेरे को क्या करना है? बाय इन्फोसिस 11,000 शेयर्स 1020 एट द रेट कितना? 1100 में खरीद लो। ये बोलेगा मेरे को यू बाय इट। आपने 1100 में खरीद लिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर और नीचे चला गया तो, उसी दिन और नीचे चला गया तो इन्फोसिस हो गया 1060। डेल्टा इज 0.177, 0.823, उसी दिन की बात है। 0.177, ठीक है, इंटू 6000 अपनी क्वांटिटी थी, 3000 थी ना? हाँ, ये नेट डेल्टा आ रहा है 1938। यू ऑलरेडी है 1022 का क्वांटिटी, तो आपको 938 शेयर और लेने। सो यू बाय 938 एट द रेट कितना में? 1060। क्लियर? अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी? आप उसमें भी बाई किए हो, इसमें भी बाई किए हो, आपको इसमें यहाँ पे जो बाई किया उस पे 40 रुपए का नुकसान लग रहा है। ओके, संगीता जी सेइंग हाउ डिड वी डिसाइड द क्वांटिटी? द क्वांटिटी केम फ्रॉम डेल्टा। यहाँ पे पहली बार 0.33 डेल्टा था, इसका 0.67 डेल्टा था। जब वो 1060 का गैप मारा, सॉरी 1100 का गैप मारा, 1100 में जब गैप हुआ था तो इसका डेल्टा निकला 0.33, 0.67। नेट डेल्टा विल बी एडिशन ऑफ दिस, दैट इज 0.34 माइनस 0.34। मेरी क्वांटिटी इस ट्रेडर की थी 3000 शेयर्स, तो 3000 इंटू 0.34, दिस इज माई नेट डेल्टा। सो मेरे को डेल्टा न्यूट्रल रखनी पोजीशन। डेल्टा न्यूट्रल रखने के लिए मेरे को 1000 शेयर खरीदने पड़ेंगे 1100 रुपए में। आई बॉट इट। क्लियर? मैंने खरीदा और मार्केट वहां से और नीचे, मैंने खरीदा और मार्केट वहां से और नीचे, मेरे को इन्फोसिस हो गया 1060। नरेश जी स्टे विद द ट्रेड। संगीता जी 3000 इज अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, आई हैव टेकन 5 लॉट अप्रोक्सीमेटली। आप एक लॉट से कर सकते हैं, पर एक लॉट में स्कैल्पिंग इज नॉट वेरी गुड। ओके, इसीलिए मैंने 5 लॉट ले रहे। वंस यू हैव सीन द प्राइसेस फॉर 5 डेज, अभी आप ऑलमोस्ट 7-8 दिन से इन्फोसिस के स्ट्रेटल के प्राइसेस देख रहे हैं एंड दे आर नॉट गोइंग डाउन एज फार एज, मतलब 50 पैसे या 1 रुपए इज द मूवमेंट, दे आर नॉट गोइंग डाउन मच। So that is why where you can increase the quantity, where you know the prices are not going to move much on the downside, then you can buy, or upside then you can sell. आप 3000 की जगह 30,000 भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, किसी के ऊपर है। अपना अपना रिस्क एपेटाइट है। वो रिस्क एपेटाइट कैसे डिसाइड करना वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब नेक्स्ट टाइम 1060 हुआ तो मेरा डेल्टा इतना आया, 3000 के हिसाब से मेरा डेल्टा 1938 करने के लिए बोलता है। मैंने ऑलरेडी 1020 पहले खरीदा हुआ है, तो अब मेरे को 918 शेयर या 920 शेयर ही खरीदने हैं।
संगीता जी, stay with the trade. Before we conclude, stay with the trade. ये कर लिया मैंने. Now from here there are two choices. You go more down or you go up. ठीक है. अभी तक का आपका क्या नुकसान लग रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है? 1060 के टाइम पे, at the time of 1060, you have a losing position of this. इस पोजीशन में तो कोई नुकसान नहीं है. जो नुकसान है इस पोजीशन में, कितने का नुकसान है? 1020 और 40 रुपए. तो योर लॉस इज दिस इनटू 40,000 रुपए का नुकसान लग रहा है ना? It will be tough for us to understand, to cope up with this losses. But sir, इसके साथ आपके पास एक ऑप्शन पोर्टफोलियो है, उसमें देखते हैं उसमें क्या पोजीशन है. This is a नुकसान in case we are at 1060. Let's find out what is our position in option portfolio. Prices are 7 रुपए और 87 रुपए, which is in total कितना हो गया? 94. आपने लिया था कितने में? 72 में. प्राइस हो गया कितना? 94. कितने क्वांटिटी थे? 3000 शेयर्स. दिस माइनस दिस, 22 रुपए इंटू 3000. सो नेट में यू आर इन प्रॉफिट्स. नेट में यू आर इन प्रॉफिट्स. Now what happens is, अब इन्फोसिस या तो जाता ही जाए या फिर इन्फोसिस यहां से घूमेगा. दोनों अपने चॉइस ले सकते हैं. अगर यहां से जाता गया तो ये डेल्टा आपको इन टोटल ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि ये 0 से नीचे नहीं जा सकता और ये -1 से ऊपर नहीं जा सकता. क्लियर? तो ये -1 हो जाएगा. जिस टाइम पे ये -1 हो जाएगा तो ये आपको दिखाएगा नेट डेल्टा इज -3000. तो टोटल में आपके पास क्वांटिटी कितनी रहेगी? 3000. आप 3000 से ज्यादा इन्फोसिस की क्वांटिटी ले नहीं सकते हैं इस पोजीशन के अगेंस्ट में. वन थिंग इज क्लियर, योर लॉन्ग क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द पुट ऑप्शंस यू हैव, और उसका एवरेज नीचे जाते जाते आपका जो ऑप्शंस जो आपके खरीदे हुए हैं उससे नीचे आ जाएगा. विच मीन्स अगर 1140 में आपने 70 रुपए का स्ट्रेडल खरीदा है एंड आपका नेट में इन्फोसिस लॉन्ग इज बिलो दिस प्राइस, दैट इज 1070. इन्फोसिस अगर आपका एवरेज में 3000 शेयर्स लेस देन 1070 में खरीदा हुआ है तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि मेरे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उसमें. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, जनरली ये चीजें अपने को मिलती नहीं है कि इन्फोसिस जाता ही जाए. अब ये देखते हैं कि यहाँ से रिवर्स किया तो क्या होता है. यहाँ से रिवर्स किया, जो कि स्कैल्पिंग का नेचर होता है कि नीचे जाता ऊपर आता, मीन रिवर्जन होता है. तो क्या होता है इन द फर्स्ट रिवर्सल, ये आप 1000 शेयर मान लो, 900 शेयर है, ये 1100 जाएगा तो इसको 40 रुपए आप यहाँ पे बुक करोगे. ये वापस 1140 जाएगा, फिर इसमें आप 40 रुपए बुक करोगे. फ्रॉम 1060 इफ इट गोज बैक टू 1140, you book 40 rupees in both the cases. Your straddle position is still intact and you have booked the profits there in scalping. Now flaws. अच्छा, पहले यहां तक में किसी को प्रॉब्लम, यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, देयर आर फ्लॉज. ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि फ्लॉज नहीं है. फ्लॉज का डिस्कशन में आपके क्वेश्चन के सारे आंसर आ जाएंगे. बाय द वे, ये कैलकुलेशन समझने में किसी को भी प्रॉब्लम हुई क्या? दोज हु हैव अ व्यू कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, लेट मी टेल यू दिस. आई डिड स्कैल्प दिस, ये मैंने किया था.
अभी ये 1125 में 300 शेयर और 1150 में 300 शेयर, 360 शेयर. आई डिड दिस. मेरे को कॉस्ट कम करना है, उसके लिए मेरे पास यही एक चॉइस है, इन ऑर्डर टू कीप द पोजीशन एंड स्कैल्प दिस. दिस इज व्हाट आई डिड एंड दिस इज हम कभी एक तरीके से करते हैं, ये स्कैल्पिंग हम करते हैं. ठीक है. नाउ फ्लॉज. Let me discuss the flaws and that will clear a lot of things for you. Flaws, or I will not say flaw. Flaw is a negative word. I mean, things to keep in mind. One. This happens. This can only happen when you have a long volatility trade and that is succeeding. मतलब आपने किसी में वोलेटिलिटी बाई की है और स्ट्रेडल वैल्यू नीचे नहीं जा रहे हैं. The reason for success of this trade was straddle was not going down, and you intuitively know that this happens. You have done your historical work and you know that long volatility trade is like this. What if मतलब अगर आप किसी दिन इन्फोसिस के स्ट्रेडल 1125 और 1140 में मैंने कितने रुपए बनाए? मैंने बनाए 6,000 रुपए बनाए मैंने. ठीक है. तो दैट इज 2 रुपीज पर ट्रेड. और इन्फोसिस का स्ट्रेडल ये अगर 5 रुपए नीचे आ गया, 65 हो गया, तो आई एम लूजिंग देयर. दैट माय लूजिंग पोजीशन. सो द कन्विक्शन ऑन योर ट्रेड हैज टू बी कि यू हैव अ गुड लॉन्ग वोलेटिलिटी ट्रेड. Even if it doesn't give you a scalp, it should not be in the losing volatility trade. मतलब volatility कम नहीं होनी चाहिए. Second, gaps are your friends. Friend. जितना बड़ा गैप अप उतना बड़ा पैसा. आप स्ट्रेडल लॉन्ग हो, so always pray कि गैप हो जाए. If you are into straddles or strangles, so you will always pray कि gaps हो जाए long में. Third, when it gives you why I did it with the 3,000 shares, why I did it with 5 lots, because when I am doing for a small scalping, मैं छोटा scalp जब भी लेता हूँ तो एक लॉट में 5 लॉट में मेरे को 300 शेयर बोल रहा है, तो एक लॉट में वो मेरे को 60 शेयर बोलेगा. 60 शेयर्स. 60 शेयर्स को लेने और बेचने में, कैश मार्केट में ये ट्रांजैक्शन करने में, एक तो कैश में आप सेल करके नहीं जा सकते. शॉर्ट सेल इज नॉट अलाउड. कैश मार्केट में आप सेल करके नहीं जा सकते. सो जहां पे आपका डेल्टा, जहां पे इन्फोसिस बढ़ रहा है वहां पे आपको कैश में बेचने के लिए बोलेगा, तो आपके पास क्वांटिटी अगर छोटी रहेगी तो कैश मार्केट में अगर आप सेल करके जा नहीं सकते, उसको फ्यूचर्स में कन्वर्ट करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 600 शेयर कैश में लो एंड उसके बाद फ्यूचर बेचो. दैट इज नॉट अ फिजिबल थिंग. Sangeeta ji, if I expect a gap, I should take a sell in options. No. If I'm expecting a gap, I will be buying options. मेरे पास ऑप्शन में, why do you buy call and put both? Call you buy because you think upside. Put you buy because you think downside. And you expect a gap in either side. So you will buy call and put both. That's what my logic says. Fourth, so if you इसमें क्या होता है कि स्कैल्पिंग छोटा करना है या स्कैल्पिंग बड़ा करना है.
मैंने अभी आपको बताया 20 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स जब इन्फोसिस 15 पॉइंट्स इन्फोसिस बढ़ रहा है या 15 पॉइंट्स इन्फोसिस नीचे जा रहा है, एक उसमें स्कैल्पिंग कर रहे हैं और एक जो 40 पॉइंट्स का गैप हो रहा है उसमें स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो अगर गैप मिल रहा है तो उसमें बड़ा स्कैल्पिंग में बहुत पैसा आएगा। लॉन्ग ट्रेड में अगर आप बड़े में स्कैल्पिंग करते हो, बड़े पॉइंट्स में, ज्यादा पॉइंट्स में स्कैल्प करते हो तो बड़ा पैसा आता है, नो डाउट अबाउट इट। सो दैट्स व्हाट इट इज। तो छोटा में स्कैल्पिंग करना या बड़े में स्कैल्पिंग करना, ये एक डिसीजन एक ट्रेडर का होता है जो धीरे धीरे करके आता है। फॉर कीपिंग दिस ट्रेड सिंपल, मोर सिंपलर, बिकॉज ये ट्रेड करने में यू हैव टू इन्वॉल्व फंड्स इन्वॉल्व करेंगे। पहला तो 3000 शेयर्स और 4000 शेयर्स आपको अगर स्ट्रेटल लेना है तो 3000 शेयर इंटू 70, दैट इज 2,10,000 रुपए फर्स्ट। सेकेंड, अगर आपको फ्यूचर बेचना है तो उसके लिए आपको 70-80 हज़ार रुपए और चलेंगे, तो 3-4 लाख रुपए आपके वो ट्रेड में लगेंगे। बट दीज आर न्यूट्रल ट्रेड्स, डायरेक्शन न्यूट्रल ट्रेड्स, एंड यू कैन स्कैल्प 4-5 हज़ार रुपए, 4-5 हज़ार रुपए वहां से निकाल के विदाउट वरिंग लॉट अबाउट द अंडरलाइंग मूवमेंट हैपनिंग। ज्यादा बड़ा मूवमेंट आया तो यू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस। The other way of doing it, if you have a small position to take, you take a straddle position। आपने 70 में लिया, 72 में लिया और उसी को 70 से 72 में आप उसको ट्रेड करो। When you know the prices are not going to move a lot, 70 से 72 में ट्रेड करो और कहीं पे गैप मिल गया तो 70 का वो 75 हो जाता है, या 72 में जो आपने लिया है that becomes 75, then you make 3 rupees there। The point is this a scalable trade 72 पे, 1 lot or 2 lot or 3 lots? To my mind, yes, it is, because historically मैंने यही देखा है कि हाँ, the prices, some prices remain there. So that is what my understanding goes about this trade. Any questions now? This trade is called gamma scalping. This trade. This trade is called gamma scalping. Let me revisit the entire trade once more. Will be better for you. सबसे पहले क्या किया, स्ट्रेडल लिया। क्यों लिया स्ट्रेडल लेने का रीजन, बिकॉज आई थिंक दी स्ट्रेडल वैल्यू आर नॉट गोइंग टू गो डाउन और गो टू इंक्रीज, जिसका जो एस्टैब्लिश अपने पिछले सेशंस में कर चुके हैं ऑलरेडी कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। एंड नाउ द इन्फोसिस स्टार्ट्स टू मूव। इफ देयर इज अ गैप, I'll be more happy. If it is not a gap, तो I'll try to look for position जहां से इन्फोसिस रिवर्स करता है। आप उसके लिए टेक्निकल लगाओ चाहे नहीं लगाओ, आपकी बारी है। बट जहां पे मेरा डेल्टा में दिखाया कि यहाँ पे डेल्टा इज मोर देन लेट्स से 400-500 शेयर्स, तो वहां पे यू स्टार्ट बाइंग द इन्फोसिस क्वांटिटी। एंड जहां पे ये जो ट्रेड है नीचे जाएगा तो आपको इन्फोसिस बाई करने के लिए बोलेगा, ऊपर जाएगा तो इन्फोसिस सेल करने के लिए बोलेगा, एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट अगेंस्ट योर क्वांटिटी यू हैव। जब आप 300 शेयर्स कर रहे हो अगेंस्ट योर 3000 क्वांटिटी, यू आर नॉट गोइंग टू वरी अलॉट। टेंशन आपको तब होगी जब आपके पास 2000 शेयर होंगे, क्योंकि उसके बाद और नीचे जाएगा तो भी आपको लेने के लिए बोलेगा। बट दैट शुड ऑलवेज बी, दैट विल ऑलवेज बी रिवॉर्डिंग टिल द टाइम it is not losing volatility. This trade is rewarding till the time it is not losing volatility. जब ये lose करने लगेगा volatility, that is that if you go in this trade after 10th also, then it becomes a risky trade. 12 को रिजल्ट है, 10 के बाद भी अगर आप इस ट्रेड में रहते हैं then it becomes a risky trade. क्यों? क्योंकि उसके बाद possibility है that volatility may fall a bit.
ठीक है, एंड यू विल नॉट गेट एज मच स्कैल्प टू कॉम्पनसेट फॉर द वोलेटिलिटी फॉल। दिस स्कैल्पिंग आप क्यों कर रहे हैं? ये मेरा थीटा जितना लग सकता है या वोलेटिलिटी गिरने का जो पैसा लग सकता है उसके लिए ये स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बट यू मे नॉट गेट द सेम थिंग्स, which is the case that happened with the TCS. If you follow, if somebody followed the TCS straddle prices, TCS started with 150 का straddle value. Currently, the straddle value is 135, and somebody who would have employed this strategy would have lost. So one basic and minimum calculation that you have to be a little sure before employing this is volatility has to go long. The volatility has to increase. Clear? Vega and theta are two more Greeks that we are going to do, and which are very easy to understand. Very very easy. बहुत छोटा वो पार्ट है, ठीक है? Vijay ji, I did not get your question. Straddle buy is call plus put buy. Call भी buy करते हैं, put भी buy करते हैं. Straddle sell is call sell and put sell. Okay, about the 300 quantity, the first 300 straddle का 3000 क्वांटिटी था, वो 300 जो थे वो शेयर्स थे, वो शेयर्स में बाई करना है कैश मार्केट में, वो शेयर्स में कैश मार्केट में बाई करना है 300 क्वांटिटी जो था। स्ट्रेडल जो 3000 था वो 3000 कॉल बाई और 3000 पुट बाई था। हाँ तो 3035 विच इज मतलब आपके 2,10,000 रुपए खाली स्ट्रेडल बाई में लगे। उसके बाद आपको कैश मार्केट में 300 शेयर बाई करने, इन्फोसिस 3,37,000, नीचे जाएंगे तो और बाई करने के लिए आएगा। कैश की जगह अगर आप इसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये 3,000 की जगह अगर ये मान लीजिए 6,000 रहता तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता 4,20,000 का। उसके बाद आपको फ्यूचर में सिर्फ बाई सेल करने के लिए आता। संगीता जी, if you sell it, how will you carry next day? Let's suppose you have 6,000 quantity and the first sell comes to at 0.10 delta, तो वो 600 शेयर्स का आएगा। तो 600 is one lot of futures। तो फ्यूचर्स में we try to sell। कैश में आप सेल करके नेक्स्ट डे कैरी नहीं कर सकते, so it is not possible। So that is the things you have to keep in mind। Short sell is not allowed in cash market। That is why वो one lot से doing this scalping is not going to work unless there are big gaps। एक लॉट से कर रहे हैं तो आप 72 में लेके उसको 74 में बेच दीजिए या 75 में बेच दीजिए। इसको ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो भी एक तरीका है, बट दैट विल, यस नरेश जी हैज अ क्वेश्चन, बट आल्सो कैन बी डन इन ऑप्शंस टू। ऑप्शंस के थ्रू करना है तो दैट विल इंक्रीज योर डिफरेंट एक्सपोजर, गामा एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज। मैं एक बार वो वेगा और थीटा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि वो एक्सपोजर कैसे इंक्रीज कर रहा है एंड व्हाई डूइंग इन कैश इज मच बेटर।
And if you have funds, yes, cash is doing in cash is better. If you don't have, you cannot employ more funds, then obviously you have to use options. Let me quickly go to Vega and Theta, complete that. That will quickly complete the Greeks, major part of Greeks for us. And then a lot of work for you will start from next week. बहुत ज़्यादा काम चालू हो जाएगा आप लोगों के लिए. Everything, because next week से result season की तैयारी and all will be there. ठीक है. एक % इम्प्लाइड वॉल चेंज होगा तो ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा? 1% इम्प्लाइड वॉल चेंज होगा तो ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा? दैट इज कॉल्ड वेगा. Let's quickly do it with the similar example. 1140. Currently the Vega निफ्टी में करते ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा. 10,400, 10,400 और आज तारीख 17 दिन बाकी है और 15% वॉल चल रहा है. Let's say Nifty is at 10,400, 10,004 की स्ट्राइक प्राइस पे 17 दिन बाकी है, 15% वोलेटिलिटी पे 134 का कॉल पुट का प्राइस चल रहा है. क्लियर? ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल निफ्टी के लिए लिया मैंने. So it is saying this is delta figure and this is Vega figure. Vega figure बोलता है 8.953 for both of them. ठीक है. इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? कि 1% अगर इम्प्लाइड वॉल चेंज होगा, इम्प्लाइड वॉल कहाँ पे अभी कितना दिखा रहा है आपने? 15. अगर 1% चेंज होगा दैट इज 15 का 16 हो जाएगा. तो जितना वेगा होगा उतना मेरा चेंज इन ऑप्शन प्राइस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर एक जाएगा, एक से मल्टीप्लाई इनटू वेगा विल बी 1 वेगा ओनली, तो उतना विल बी द चेंज इन ऑप्शन प्राइस. तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इस 15 को 16 कर दूं, अगर मैं इस 15 को 16 कर दूं तो करंटली जो प्राइस है 0.306 will be increased by 8.953. Got my point? This is what the Vega is telling me. So price कितना हो जा रहा है? 143.259. बट ऐसा तो होता थोड़ी है, इतना ऐसे प्रिसाइजली थोड़ी हो सकता है कि 15 को 16 करते ही वो हो जाएगा. लेट अस सी. हाँ, सही बात है. हो गया. 15 को 16 किया 143.259, 143.259. So it happens. This is the closest approximation for the volatility. Volatility 1% बढ़ा
तो मेरा ऑप्शन प्राइस पे कितना चेंज आएगा? यू सी कॉल एंड पुट दोनों में चेंज आ रहा है. दैट मीन्स वेगा फॉर कॉल एंड पुट is a positive number. The property for Vega is Vega for call and put is a positive number. ठीक है. Now अब धीरे धीरे इसको एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं आपके सामने. अभी 16% वोलेटिलिटी है, नंबर ऑफ डेज इज 17. If I increase the number of days, Vega will increase or decrease? Vega will increase or decrease? देखते हैं. 17 है, इसको 7 करते हैं. अभी 17 के टाइम पे कितना था? 8.953. तो 7 के टाइम पे वेगा में क्या बिहेवियर होगा देखते हैं. क्या हुआ? कम हो गया. अगर इसको 37 करते तो बढ़ गया. सो एज नंबर ऑफ डेज आर हायर. अब लॉजिकली सोचते हैं इसको, जितना ज्यादा नंबर ऑफ दिन है उतना ज्यादा ऑप्शन में वो प्राइसेस है, तो उसका वेगा उतना बड़ा होगा. इसको इन टर्म्स ऑफ, लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ अ कैलेंडर ऑप्शन ट्रेड. वर्सेस एक मई मंथ का ऑप्शन. तो अप्रैल मंथ में वेगा विल बी लोअर देन दी मई मंथ. अप्रैल मंथ का वेगा विल बी लोअर देन द मंथ ऑफ मे. सो अगर इफ आई एम थिंकिंग ऑफ राइज इन वोलेटिलिटी, if I'm thinking of rise in volatility, तो I can think of buying May and selling April. नेट में मेरे को इफेक्ट उसमें ज्यादा मिलेगा अप्रैल में, unless there is a event in between. इवेंट नहीं है तो ये क्लियर. ये होगा डेज टू एक्सपायरी के हिसाब से. $10,400 के टाइम पे 10,400 है ना. हाँ ठीक है. नाउ लेट मी चेंज द स्ट्राइक प्राइसेस. उसका बिहेवियर देखना है. अभी 10,400 के टाइम पे वेगा इज 8.41. मैं इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का वेगा देखता हूँ. कॉल के लिए इन द मनी होगा, पुट के लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा. तो 10,100 वेगा दोनों का बराबर है. वेगा गिर गया वर्सेस एट द मनी से. गिर गया. इन द मनी यहां पे थोड़ा सा बढ़ा, यहां बढ़ा, एट द मनी पे ये वेगा हो गया. अब आउट ऑफ द मनी में जा रहे हैं अपने. कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी हो गया. ये फिर गिर गया और गिर गया. सो वेगा इज ए बेल शेप्ड कर्व. एट द मनी इज हाईएस्ट. एट द मनी में हाईएस्ट होता है. ये नोशनल अंडरस्टैंडिंग अब इधर से लेके आते हैं. कैसे? वेगा इज हाईएस्ट एट द रेट एट एटीएम. क्यों? बिकॉज वहीं पे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है. प्योर टाइम वैल्यू, रिमेंबर दैट. सबसे ज्यादा वेगा वहीं पे होगा. तो वोलेटिलिटी के चेंज के कारण जो ऑप्शन प्राइसेस पे चेंज होगी, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ पे होगा. सो द रिलेशनशिप ऑफ वेगा वर्सेस स्ट्राइक प्राइसेस और डेल्टा. एटीएम वेगा इज द हाईएस्ट.
I'll quickly go to the definition of theta and उसको एक बार ग्राफ में समझा के let's finish the session now. वेगा एंड थीटा को क्विकली समझा के मैं इस पे बहुत ज्यादा जो डिस्कशन करना है डेल्टा वेगा थीटा को मिला के इसको नेक्स्ट क्लास के लिए वी विल कीप, बिकॉज आज इससे ज्यादा देने से बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा. Thanks. The definition for theta is change in option price divided by change in number of days. एक दिन जाएगा तो ऑप्शन प्राइस घटता है, so theta is always a negative number. Theta is always a negative number. Its property is similar to vega, just highest is means lowest. तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ ऐसे उल्टा हो जाता है, ये नेगेटिव नंबर है हाईएस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर हाईएस्ट है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर्स इट इज द लोएस्ट एट ATM. Theta in absolute terms keeps on increasing as the number of days goes by. एक दिन बीतेगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थीटा विल इंक्रीज और जल्दी स्पीड से टाइम वैल्यू गिरेगा. ठीक है, ये वेगा और थीटा की डेफिनेशन है. प्रॉपर्टी उसकी भी एडिटिव प्रॉपर्टी है जो डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है. आई विल नॉट ऐड एनीथिंग फर्दर टू टुडेज डिस्कशन. मैं इस डिस्कशन को अभी यहीं पे एंड करता हूँ. If you have any questions, you can put on the questions. Till that time, I'm writing the task that you have to follow in the coming week. क्या क्या follow करना है आपको? You have to follow IVs of 4 stocks of your choice. Large cap with one, it has to be a large cap with 1 IT and 1 bank included in it. IV in terms of IVs, IVP, IV rank, जो भी आप follow कर सकते हैं. Actual IVs also. Follow the events by dates. Results, date and announcement time of last 2 results. For example, TCS results are EOD, SBIN results are between 11 to 2. 11 a.m. to 2 p.m. So the choice of stocks that you are going to have, you have to find the results, announcement time, date first, date कब है इस बार का date, and उसका time of last 2 results. ठीक है, आपको 4 stocks follow करने हैं, ये दोनों follow करना है. OI,
of last OI of the stocks. OI of the stocks. Nifty, Bank Nifty, IV, and butterflies. Bank Nifty के butterflies. ठीक है, बाकी ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द टास्क आई विल कीप ऑन गिविंग यू ऑन दी व्हाट्सएप. ठीक है. नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज इंटरेस्टिंग वन, वो एक मेरे को लेने का मन है, उसके बाद वी विल एंड द क्लास. हो गया. Give us an example of a script in which a direction and non-directional trade, and this plan the strategy if possible. Non-directional trade, as I mentioned, I have in NFE. I'm doing a gamma scalping trade there. I have mentioned this in the blog also, that is there mentioned in the group. वो एक ग्रुप में एक वो आर्टिकल का लिंक डाला हुआ है which is about gamma scalping trade. That's the same NFE trade that I do, and ये रिवर्स होगा मेरा 10 तारीख के आसपास, that is 9-10 को रिवर्स हो जाएगा ये ट्रेड. 1. Directional trade. For directional trade, it is all about the position sizing rather than about the direction of the trade and what is there to make and what is there to lose. I don't know whether this is a valid line or not. I am not sure. A lot of people are saying no, a lot of people are saying yes. I have my current strategy is based on this is I have borrowed it from one of my technical analyst colleague. This is not my discovery. This is my technical analyst colleague which has shown me. But before that, as a trader, I knew as it was spending a lot of time Nifty here. यहाँ पे बहुत टाइम पहले भी इसने स्पेंड किया था. ये यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ जो भी है. So currently I have a short bearish position in Nifty which I took in the last day. Yes. The current position in the market, global market जैसा अभी दिख रहा है उस हिसाब से तो इसमें प्रॉफिट आना चाहिए. But let me tell you about the previous few positions. इस दिन डोनाल्ड ट्रम्प वो चाइना की अनाउंसमेंट हुई थी. दिस वाज अ चाइना अनाउंसमेंट डे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर चाइना अनाउंसमेंट मिस्टर ट्रम्प विल अनाउंस समथिंग. सो आई टुक अ पोजीशन ऑन दैट बेसिस आल्सो, अ बेयरिश पोजीशन, एंड आई लॉस्ट इन दैट. सो going for direction, the loss and profit is more about position sizing and the amount you are employing there. So यहाँ पे लूज किए थे. उसके बाद as a trader we call ourselves a chameleon traders. I prefer to call myself. Why? Because as an option trader you have to change your position very fast according to the market. So this is what my purpose is. I am not a long term guy, so in my trades I'm not a long term guy. In my portfolio I may be a long term guy, but in my trades I'm not a long term guy. So that is why I changed my positions and took a long position there. Changing position and taking a long or short call is something one has to understand before going for a directional trades.
from options, can we get a directional trade? The answers are given in the OI segment, so I don't need to repeat everything once more. That is all I can say about the directional trades. The faster you get out of your directional trade, the easier it is. जितना आप डायरेक्शन से बाहर निकल जाते हैं, ऑप्शंस से बाहर निकल जाते हैं, उतना बेटर रहता है, ये मेरा मानना है. So this is my answer to that query. And as far as one query was Bank Nifty everyday trade. Yeah. Open a 5-minute to 15-minute chart in Bank Nifty, maximum 1 hour chart in Bank Nifty, and try to trade as per the chart. जो भी आपको चार्ट के में समझ में आता है, try to trade as per chart in options which are priced greater than 50 rupees. 50 रुपए से ज्यादा के ऑप्शन में, 50 से 100 रुपए से ज्यादा के ऑप्शन में उसमें ट्रेड करते रहो. दैट्स दी ओनली ट्रेड इन दी बैंक निफ्टी जो कि आप एवरीडे कर सकते हो. उससे ज्यादा कोई ट्रेड नहीं है मेरे पास. चार्ट है, चार्ट में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट आपको जैसे देखना आप देखो. The stop loss and target calculations are based on your charts only, nothing else. Yeah, this is the answer to the questions. For rest of the questions, can we take the help of WhatsApp? Kindly post your questions on WhatsApp. Let me close the session for today, if that is okay. Unless you have a very urgent question pertaining to today's session की कोई calculation नहीं समझ में आया, I'm still here. For those who want to leave, can leave. गिरीश जी, नरेश जी, नेम प्रसाद जी, निर्मल शुक्ला जी, संगीता जी, विजय जी, वहीद जी, any questions? Thank you all. Thanks for such a hectic session and staying by. Next week we will have session on Saturday and Sunday both. Nifty, Bank Nifty, IVs and butterflies. Yes, butterfly calculation, and you have to show it. Not necessarily you have to execute everything. आपका उसमें जो भी सर्टेन कोई भी व्यू बन रहा है वो आपको व्यू को शेयर करके एक बटरफ्लाई लेना कि ये मेरा व्यू बटरफ्लाई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. And I may ask you to follow other butterflies also. So you have to WhatsApp में क्वेश्चन आंसर बहुत सारे होंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू.